1000 को अगर उसी तरीके से एक्सट्रैपुलेट करूं तो अगर ये 4 साल रह जाएं और यही इनकी कारकर्दगी रहे तो अल्लाह ही हमारा मतलब होगा, हाफिज होगा, क्योंकि ये फिर 51 ट्रिलियन मतलब 51,000 अरब रुपए का ये डेट क्रिएट कर देंगे। तो जो मैंने आपको कहा कि ये जो कीमतें हैं ये बढ़ाई गई, जब तो पेट्रोल 150 था वो 225 पे है, अब डीजल जो है 236 पे चला गया है, इलेक्ट्रिसिटी डबल हो गई है, आटा डबल हो गया है, घी जो जिसकी इंटरनेशनल प्राइसेस कम हो गई हैं अभी, मतलब जो पाम ऑयल की, फिर भी 473 रुपए पे हमारा वो केजी था, अब वो 524 रुपए पे चला गया, और बाकी सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो अगर देखा जाए तो अभी इस वक्त जो हालात हैं वो ये हैं कि जो हम जिस वक्त छोड़ा था हमने मार्च में, तो एक्सपोर्ट जो थी वो 3.1 अरब डॉलर थी, अब वो 2.5 पे आ गई। इसका मतलब 19% जो है वो कमी हुई है। और आपको मालूम है पिछले साल एक्सपोर्ट्स 28% बढ़ी थी, अब वो 19% उसमें कमी आ गई है। आईटी जो थी वो हर महीने 260 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट हो रही थी, अब वो 206 पे आ गई है। इसका मतलब 21% कमी हुई है। पिछले साल 45% मतलब बढ़ावा हुआ था, अब 21% कमी हो गई है। अगर आप टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स देखें तो ये 1.6 बिलियन डॉलर्स थी अक्टूबर पिछले साल में, और इस अक्टूबर में ये 1.36 बिलियन है। इसका मतलब है 15% कमी हुई है इसमें। और पिछले साल जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स थी वो तकरीबन 26 से 27% ग्रो कर रही थी। अगर आप रेमिटेंस देखें तो रेमिटेंसेस में भी कमी हुई है। रेमिटेंसेस जो थी वो 2018 में 19 बिलियन डॉलर थी, 19 अरब डॉलर, और वो बढ़ के 31 अरब डॉलर हो गई थी पिछले साल। और इस साल जो है, जो अगर 4 महीने देखे जाएं तो वो पिछले साल से तकरीबन 8% कम है। आप एक और चीज़ हमने इंट्रोड्यूस की थी, रोशन डिजिटल अकाउंट, उसमें 290 मिलियन डॉलर हर महीने जो है वो बढ़ रहा था, और अब वो सितंबर में वो कम हो के 168 पे आया, और अक्टूबर में 100 पे आ गया। ये 1 महीना पुरानी आपको मैं फिगर्स दिखा रहा हूं, तो अभी का ये जो फिगर्स हैं वो 100 पे आ गया। इसका मतलब है 65% जो है वो रिडक्शन हुई है। मशीनरी आपको पता है जब आती है तो इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट होती है, कारोबार होता है। वो जो अक्टूबर पिछले साल में जो नंबर था वो 872 बिलियन डॉलर था, अब 457 मिलियन डॉलर हो गया इस साल, 48% डिक्लाइन है। अगर आप डेट को देखें तो ये 8.9 ट्रिलियन का जो डेट और अदर लाइबिलिटीज जो हैं वो बढ़ गई हैं, जिसका मतलब है 17% डेट बढ़ा है इन 6 महीनों में। रिजर्व जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस शुरू हो रहा था तो उस वक्त 16 बिलियन डॉलर के थे, आज वो तकरीबन 8 बिलियन डॉलर है, 51% कमी होगी। और जो मार्केट है वो समझ रही है कि इनके पास इस साल पैसे नहीं होंगे अपनी वाजिबात देने के लिए, तो जो डेट जो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप है वो आज की डेट में उन्होंने दिखा दिया था 122% है। तो लेकिन चलें, आज से कुछ दिन पहले ये तकरीबन 69% था। ये एक मतलब ज़रूरी नहीं है कि मतलब डेट स्वैप जो है लोग जाके स्वैप कर लें या इंश्योर कर लें। ये एक किस्म इंडिकेटिव परसेप्शन होता है मार्केट का कि मार्केट के बीच में क्या लोग सोच रहे हैं।
اور اس کا پرابلم ہی یہی ہے کہ حکومت کو میں بار بار میں بھی کہتا رہتا ہوں کہ آپ ذرا اپنی کیش فلو دکھا دیں، اس میں چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے ضروریات جو ہیں وہ $40 بلین ہیں، جس میں 6 ہم نے ریزرو بڑھانے ہیں، لیکن چلیں $34 بلین کے ہمارے جو واجبات ہیں اس کا کس طریقے سے ہم ان کو پورا کریں گے، اور وہ آپ کیش فلو ان فلو اور آؤٹ فلو دکھا دیں گے تو مارکیٹ میں ایک قسم سے اعتماد آ جائے گا اور آپ کا یہ سی ڈی ایس وغیرہ کم ہو جائے گی، یا آپ کا ریٹ جو ہے ایکسچینج ریٹ آپ کا مضبوط ہو جائے گا۔ مارکیٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اس وقت ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ یہ سارا کچھ ہوا ہے اور اس میں فلڈز کا بھی ایک حصہ ہے کہ ان امپلائمنٹ کو تقریباً 22.5% سے انکریز کرے گی، کیونکہ فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے اگر ایکسپورٹ کم ہو رہی ہے، مطلب اگر گروتھ جو ہے 6% سے 0 پہ آئے گی تو یہ ان امپلائمنٹ تقریباً 22.5%، اور ایکسچینج ریٹ جو آپ کا ہے وہ 25% کم ہوا ہے، اور اس کے بیچ میں اگر آپ دیکھیں ہم 178 پہ چھوڑ کے گئے تھے، آج کی ڈیٹ میں یہ 223 ہے انٹر بینک میں، 230 ہے ایکسچینج کمپنیز دے رہی ہیں، اور 240 پہ ہے آپ کا جو ہے ایک قسم انفارمل حوالہ۔ مارکیٹ نے کیا کہا ہے؟ مارکیٹ کہہ رہی ہے، ریٹنگ ایجنسیز کہہ رہی ہیں کہ آپ کی ریٹنگ وہ نہیں ہے جو پچھلے سال تھی، تو انہوں نے پہلے اس کو نیگیٹو کیا اور پھر ایک ناچ نیچے گرا دیا۔ موڈیز نے آپ کا B3 سے CAA1 کر دیا، اور فچ نے آپ کو B- سے CCC+ کر دیا۔ تو میں اینڈ پہ جو کہنا چاہوں گا، کیونکہ میں تو ایک آپ کو اوور ویو دے رہا ہوں، یہاں ہمارے اسپیشلسٹ ہیں جو کہ آپ کو ہر ایریا کے بیچ میں بتائیں گے کہ وہ کیسے دیکھتے ہیں۔ میرے نزدیک تو پولیٹیکل انسرٹینٹی جو ہے اور رجیم چینج کی وجہ سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی نے پاکستان کی اکانومی کو ڈیریل کر دیا، اور میں نے آپ کو وہ سلائڈز دکھائی ہیں کہ 6 مہینے میں جو بربادی ہوئی ہے وہ اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ جو رجیم چینج ہوئی تھی اور جس طرح بھی ہوئی تھی اور جس نے بھی کی تھی، اس کی وجہ سے ہماری اکانومی برباد ہو گئی ہے۔ ہمیں پھر سے شروع کرنا پڑے گا جو ہم نے کام شروع کیا تھا۔ مارکیٹس، انویسٹرز، ہمارے اپنے دوست ممالک جو ہیں وہ ہمارے پہ بیٹ لینے کو تیار نہیں ہیں اس وقت۔ وہ کیوں بیٹ لینے کو تیار نہیں ہیں؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت جب سے آئی ہے یہ 75% الیکشن ہار چکی ہے۔ کراچی میں سے الیکشن ہارے ہیں، پورے ملک میں الیکشن ہارے ہیں۔ اس کا مطلب ہے وہ کہہ رہے ہیں یہ تو سٹیبل، یہ ہمیں نہیں لگتا کہ زیادہ دیر یہ حکومت رہے گی، ایون اگر الیکشن بھی ہوئے تو وہ ہمارے اوپر بیٹ لینے کو تیار نہیں ہے، ہمیں پیسے دینے کو تیار نہیں ہے۔ سو ہماری جو اکانومی ہے وہ ایک قسم سے ایک کیوس میں ہے، اور پاکستان کو اب کیا چاہیے؟ پاکستان کو ایک سٹیبل گورنمنٹ چاہیے، اور سٹیبل گورنمنٹ اس وقت آ سکتی ہے جب آپ فریش، فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں۔ ہمیں الیکشنز کی طرف جانا ہوگا، بیکاز جب تک ہم الیکشن کی طرف نہیں جائیں گے اور ایک مضبوط حکومت نہیں آئے گی، یہ جو انسرٹینٹی ہے، پولیٹیکل انسرٹینٹی، یہ ہمیں اکنامک انسٹیبلٹی دیتی رہے گی، اور جب وہ ہوگی تو ہم اس کے بعد پھر سے وہ پروسیس جو تھا جس کو ہم پہلے کہتے تھے انکلوسو اور سسٹینیبل گروتھ کی طرف گامزن ہوں گے۔ اس کے بارے میں اینڈ پہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارے چیئرمین عمران خان نے مجھے حکم دیا اور ہماری ٹیم کو کہ یہ تو ہم کرتے رہیں گے جو پالیٹکس ہے، آپ اکانومی کی طرف توجہ دیں، فیوچر کی طرف توجہ دیں، اور آپ اس وقت پلاننگ کریں ہر ایریا کی کہ اس وقت اگر جب الیکشن ہو جائیں اور انشاءاللہ ہم آئیں گے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے، وی مسٹ ہٹ دی گراؤنڈ رننگ، اور اس کے بیچ میں ہم وہ پلاننگ شروع کر چکے ہیں۔ ہم پہلے یہ جو ہم کھڈے میں جا چکے ہیں، ہم نے کھڈے سے کیسے نکلنا ہے، اور پھر انکلوسو سسٹینیبل گروتھ کیسے لے کے ہم نے کرنی ہے جس سے
हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो अपने पांव पे खड़ी हों और किसी से उनको मांगने की जरूरत ना हो। बहुत शुक्रिया। Our second speaker is Honorable Mr. Salim Raza Saab, and he is the ex-Governor State Bank, seasoned banker, worked for Citibank, and he don't need also any introduction. Mr. Salim Raza Saab, thank you. Okay, thank you. अस्सलामुअलैकुम ख़ातीन हज़रात, आपकी इजाज़त से मैं अंग्रेज़ी में बोलूँगा क्योंकि ये इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी जो है उसका सबका तर्जमा मैं उर्दू में कुछ जानता हूँ कुछ नहीं जानता हूँ, तो बेहतर है कि मैं अंग्रेज़ी में कहूँ so that I know exactly what it is that I'm referring to. So, my subject is twofold. I want to talk about the economic strain that debt is now imposing on the economy, in which ways it's imposing that strain, and what are some of the things we can do to ease the pressure. And secondly, I'll talk about how a considerably well-endowed financial sector is really falling quite short of the development role that it needs to play, and why it remains a small sector with very limited private credit, and what we can do to change that. So, as a general point, I think we are all aware that our economic malaise has to do with is evident in that we can't grow more than 5% for any period of time without toppling over, without running into encountering balance of payments pressures, and that's been happening for the last 30 years. And so that has ensured that we keep going back to the IMF, in whose programs we've spent a great part of the last 30 years. This is the core reason is lack of investment, 15% of GDP. Our neighbors are at 30% of GDP. We need at least 25% of GDP to ensure sustainable 6% or more higher growth. Well, the result is that we have an industrial structure with lots of spaces, lots of gaps, lots of missing pieces, which we fill with imports, which we fill with foreign exchange debt that gets us imports, because we run trade deficits in the end. Also, our agricultural productivity has not grown. It's been quite static. And from being agri-exporters some years ago, we're now agri-importers. So the bias of our economy, with growth is that we will suck in more and more foreign debt to balance the economy. So going forward, if we're going to break this chain, we have to look at reforms, restructuring, which will be implemented, which will show results in the medium and longer term. And as long as we're not willing to undertake those reforms, because short-term pressures are too high, and very often the short-term pressures come from trying to meet IMF targets. Because, as I said, much of the period's been spent under IMF programs. So it's either that or it's political pressures, but we haven't got around to medium and longer-term reforms. And I'll stop this subject on that note, that as we go forward, the short term and the medium and the longer term have to be addressed harmoniously. I think that's what Mr. Tareen said, that it is the intention to go forward that way. So returning to my subject, so foreign currency debt, the pressures of foreign currency debt. If you look, this is from the IMF staff papers as of the first week of September this year, so 2 months old. So this is their forecast for our financing requirements over the next 3 years, and how those financing requirements, the financing sources, how those will be, where the money will be raised from, what are the sources. So
if you see the line I've highlighted, borrowing from private sector creditors, this is now under considerable strain, not just for us, but for a wide swathe of emerging markets because of changes in the global economic environment. This 16 for this year is not viable, and certainly the 22 and 21 in the next 2 years is not viable. So what that would suggest is that some kind. So if those inflows are not viable, then the debt servicing, which is that first line, that's our financing requirement. That's what we need to repay, and we need to fill our current account deficit. That becomes unviable. We cannot raise resources to service our debt. So we have to look at some form of debt restructuring. As I said, this is now not just an issue for Pakistan, it's an issue for a large number of emerging markets because the external environment has changed. Higher dollar exchange rates mean a bigger cost of imports on countries. The higher interest rate means much higher debt servicing costs for borrowing countries. The rolling back of quantitative easing that's been in place for the last 14 years, that is now forcing interest rates even higher, and energy spikes or energy shortages, energy spikes and prices are causing inflation across the West. Now, and therefore demand in the West is declining. Growth for advanced countries is meant to decline according to the World Bank from 5.1% this year to 3.8% from 5.1% last year to 3.8% this year and 2.3% next year. So that would mean a lower propensity for them to import from developing countries, from emerging markets. So emerging markets exports are going to go down as well. So in addition to facing all these problems, along with the other emerging markets, we have our own problems. We have the floods and the counterpart of the floods. Now, my point simply here is that there is no need now for us to not consider debt restructuring and not reach out to our creditors and talk to them about what can be done. I'm not suggesting any imminent default, as the finance minister and the governor of the State Bank have said. This bond that is due in the first week of December will be met. But then down the road, a few months after that, we will need to consider, we will need to have completed some kind of restructuring arrangements. Now, what should they be? That's our list of creditors. Multilaterals, the biggest amount is owed to the World Bank. Bilaterals, which are Paris Club and non-Paris Club. Paris Club, 10.7, biggest part Japan. Non-Paris Club, if you add all the different portions of China up, that comes to 23 billion. And then bonds, 8.6, and commercial credit. This is borrowing for trade, borrowing from sovereign, syndicated loans from banks, and then separately borrowings from Chinese commercial banks. Now, in fairness, our approach towards restructuring should be, first of all, it should be comprehensive. In other words, not piecemeal, not a little here and a little there, and one rollover here and another rollover there, but let's take the whole span of our debt and think of a period of grace, an extension that gives us time to recover, so that we can get on to proper debt servicing capabilities in, say, 3 years from now. That's what the approach should be. It's also unfair to look at one particular creditor to support you, because effectively you're asking him to subsidize the people whose debt you are not restructuring. So you transfer the burden from you as the borrower, you transfer it to the one creditor who lent to you, because you send that money on to another creditor who's not restructured. So it's fair that we look at involves everyone, and it's reasonable that we think of
one substantial restructuring, not little piecemeal restructuring. So, that was the issue on external debt. If we don't, I'm sure they are thinking about it in Islamabad, but if it's not well launched in the next couple of months. By the way, after the G20, after the suspension, this debt servicing suspensive initiative, the DSSI, after it finished last year, the G20 came up with another program. It's called the Common Framework for Debt Treatment, anticipating the problems emerging markets are going to have for all the reasons that I mentioned. They have opened a forum that is going to look at debt restructuring preemptively. Countries can apply, they'll take a look, and if they think restructuring is right, due, they will set up a creditor committee within 6 weeks to take matters further. It's not moving very fast, this program, but I just want to point out that the advanced world has accepted that there is going to be a measure of strain, and it's better that the debt problem be handled preemptively rather than wait for defaults like in the 1980s or like in the Asian crisis, which then feed on themselves and make matters much worse. So those are my comments on foreign debt. On domestic debt, which is also a big strain and is squeezing resources out of our economy. Let me start with the banking sector, because that will take us on to government debt and show the crippling effect that government debt is having on the rest of the economy, the crowding out effect on the rest of the economy. Our banking sector is small, and there are lots of reasons for that. I won't bore you with them, but because the banking sector is small, we have one of the lowest private sector credit to GDP ratios, around 17–18% is what it is and what's it been. I mean, that's not adequate for 220 million people. That's not adequate for an economy that would aim to grow 7% or 6%, 7% like our neighbors are. So, one reason why our advances are low is because the banking sector is small. The other is because the giant appetite. This is what's happened to advances to deposits of banks since December 2005. So from a ratio of 75%, in other words, banks lent $75 of every $100 that they got, it's now down to about 46–47%. So out of every $100 they get, they lend only 45 or 46. So where does the difference go? The difference goes in government in government debt. The difference goes in government debt. This is the rise that those blue dots are the rise in borrowing from banks by the government. The red dot is if you combine borrowing from banks with borrowing from the state bank on the part of the government, you can see that it has really put the squeeze very heavily on the capacity of banks to lend to the private sector, and in fact wiped out the SME sector. The SME sector, you measured it on the right-hand side, the SME sector once took about 18 or 19% of total credit, fell down to 5 in about financial year 13, and really since then has continued stagnant or even shrinking. Where has the money gone that would have gone here? It's gone to government debt. So that's one problem. How do we deal with it? I'll come to that. We deal with it by the government debt today is about 30 trillion domestic, local currency, of which PIBs and treasury bills are about altogether about 21 billion, out of which about 16 billion is held by commercial banks and 5 billion is held by the state bank. Sorry, PIBs and treasury bills are about 24, but 80% of the issue
of those bills and bonds are held by commercial banks. So that is what has replaced credit on the balance sheet of banks, because these securities, government securities, require no capital. They're zero rated for capital, and they give the banks a comfortable spread, zero risk spread. So that's the way banks have gone. Well, we'll talk about what we need to do about this in a minute. So that's one problem for our low credit, which of course compromises growth. The second is our currency to deposit ratio. It is truly, it's a bizarre number. It has no parallel with anywhere else in the world. The next highest country I could find was Peru at 21%. Now, what this means is there are, well, in numbers, there's about 7.7 trillion, about 8 trillion that's held in cash, and there's about 21 trillion in deposits. If you know the banking multiplier, to bring 1 trillion in cash will give you, because one bank makes a loan, that becomes a deposit in the second bank, that bank makes a loan, which becomes a deposit in the third bank. It's about 3.5, 4 times. So 1 trillion coming in will give you 3.5, 4 trillion more expansion of banks' balance sheets. So it is vital to get this 7.78 trillion down by 2 or 3 trillion. So we have to squeeze this as well. And both these things together, government borrowing outside banks and a reduction of cash outside banks, will then give the banks the horsepower. They'll have to lend, they'll have to go back to the SME, where else will they lend? If the expansion of the balance sheet exceeds, if government starts borrowing outside and the expansion in their balance sheet exceeds the needs of the large corporate sector, where the banks focus their debt, their lending now. Well, I won't go through these one by one in the interest of time. The wider distribution of, first of all, the government security profile has to be put into proper shape. We have a debt management office, but we need an empowered, centralized debt management office with support from market operators. We need people with market experience running this. We need objectives for for how they're going to diversify debt, for how they're going to lower the long-term cost of debt. And we need very badly to create a yield curve. Now, I don't want to go into detail, but a yield curve simply means the government borrowing at 3, 5, 7-year maturities in such quantities that trading in those government securities, because the government is borrowing so much in those categories, instead of borrowing 30 and 90-day treasury bills, because it's borrowing so much, people will invest in that paper, trade in that paper. What you'll get is a liquid market, and that the rate that 3-year paper trades at then is fixed. You have a benchmark, or you have a similarly for 5 years, similarly for 7 years. And therefore, what the private sector can then do is issue fixed rate bonds, which in this market is absent. Our private sector shouldn't be, our big companies shouldn't be borrowing from banks. It's cheaper to borrow from the bond markets. In America, the bond market is about 4 times the size of corporate debt of banks. But our bond market is barely developed, and one of the biggest reasons for that is the absence of this yield curve. Anyway, those are the responsibilities of the debt manager. Expand mutual funds, add non-banks and stock exchange custody and clearing institutions, add them to your primary distributor list, so your primary distributors are not just 6 big banks, but a lot of market players. So you widen your distribution pool, introduce the digital web for retail investors. You know, banks give you whatever they pay you on your savings account, they earn 1.5%, 2% more on treasury bills. So why can't a small savings investor buy the treasury bill himself? And if you have a digital web portal, then anyone with 10,000, 20,000, 30,000 rupees can go and buy a treasury bill or buy a bit of a treasury bill. Treasury bills should also be fragmented once retail investors come in a big way.
greater access of foreign investors, not today, today we may not be attractive, but it can all change in a year, year and a half. Use global clearing systems, increase trading on the stock exchange itself, identify new assets for Sukuk issues. The reason our Sukuk issue is muted is because the government's had problems identifying assets. They exist. They usually need some clearing up on title, etc., which should be done, and then we should consider asset-light Sukuks. For example, commodity financing. Asset-light means it's not a building, it's not a railway track, but it's a crop, which will disappear in 6 months' time. However, the crop produces cash flow. So you can do a lot of short-term financing for Sukuks if you can get the right framework to issue asset-light Sukuks. Tax is, I won't talk about it. Let's take it for granted. We need to make these tax efficient. Reduce high level of central bank SMOs, OMOs, and OMO, open market operations. These are injections that I'm referring to that the State Bank carries out. The State Bank buys treasury bills from banks, gives them fresh money, gives them money, with which now the old treasury bill is a repo. So the bill they bought hasn't been sold to them, it's been repoed. So it's still owned by the bank. Now with the money you've given the bank, you sell them a fresh government treasury bill. That money goes into the government's account, into the Ministry of Finance's account. So this is government financing by the State Bank indirectly, as opposed to directly, primarily, which the IMF forbids. But it's gone up to 5.1 trillion. It's 25% of our deposits. It is equal to 60% of our loans. It's far too much. So the first success with widening distribution and raising more treasury bills should be to run this SMO figure down from 5.1 to really under 1 trillion. Now, that can happen over a long period of time. They should certainly get it down by 1-2 trillion in the short term. I've only taken, again, in the interest of time, I've only taken one strategy for pulling in cash. One of the biggest, one of the most important reasons people hold cash, yes, of course, there's an informal market where, there is not unrecorded market where cash is obviously the way to trade, not through bank accounts, that gets you into the recorded market. But they're also important, the other important reason people hold cash is the transactional need. 96% of our transactions, our retail transactions are still cash. And this is, it's very significantly higher than anywhere else. So, if we can get, we've got about 3.5 million vendors of all types, from supermarkets to small karyana stores. If we can persuade all of them to work on a QR code basis, then the buyer doesn't need to hold cash. Then if he gets his salary, he puts it into a bank account, he doesn't keep it at home. I'm talking about people earning 60, 70, 40,000 rupees a month. And all that cash then transfers to the banking system. Collectively, that would be a huge amount. Exemption of duties on digitization of fees, digitization of government revenue and government receipts and payment. This is already, the system has been prepared. I don't know the reason for the delay. It was sitting with the AGPR, the Accountant General Pakistan Revenues, but the system is ready to work between the State Bank and the government. The technology has been established and all the banks. It's just up to the government to give its green light. Now this will deal with a lot, this will eliminate a lot of the cash if the government receives and pays digitally, because a lot of government payments are still in cash. CDNS, digitized CDNS, this is the National Savings Scheme. So foreign debt, domestic debt, getting the banks, enabling the banks to lend more through reducing the role of government and banks' balance sheet. This is the last slide I had. Development finance, as you saw, lending to the SMEs is only 6% of private sector lending by banks, and agriculture is the same, it's about 6%. Now,
these sectors are the biggest employers in the country. They have the most potential to grow. And they are really, by and large, on the fringes of formal finance. So we need to get institutions that focus on them. If you look at the largest countries in Asia, the largest economies, you look at Japan, you look at South Korea, China, India, in their development stage, they built the middle of the economy through public sector development banks. Now, they don't have to be public sector, but in their case, they were public sector, who devoted to these things that I've put SMEs agriculture. And by the way, it's not just money, it's also advisory services. It's also helping them build supply chains. It's also to agriculture supplying machinery, leasing tractors to them, or supplying them with cold chains and supplying them with warehousing. That's what these development banks do. Now, how can we suddenly create a big development banking sector? We have let the development banks we have die. There was Big IDBP, there was Bankers Equity, NDFC, RDFC, Housing Bank. They've all sort of fallen by the wayside. So how do we today get a full-blown development banking sector? Do we force our banks to do it? Do we go India's way and impose directed lending rules so that 40% of bank lending is in these sectors? Not the ideal way to go about it. So I'm not sure how we do this. Just some thoughts. We can convert our provincial banks. So that's Khyber Bank, Sindh Bank, Bank of Punjab, into provincial development banks. And they stop all other business. And they deal with these subjects in provinces. One possibility. And there's one apex bank on top of them that's keeping sight. That's one possibility. I'm not saying it's the right one, but I just suggest it's one. We've got 6 development finance institutions, a lot of money, but not really lending. Much of that cash sitting in treasury bills and PIBs. Convert the 6 into a single institution. With the support, each has a joint venture partner. There's a country in each one of them that Pakistan has partnered with. So with their support, and you can allow each development bank to choose the sector it wishes to engage in. You know, for someone it could be infrastructure, for someone it could be agriculture, for someone SME. So they have that option. That's one possibility. Or you just impose development financing on the big state-owned banks. So again, National Bank, Bank of Punjab become pure development banks and nothing else. The important, you see, we can't blame our private sector banks too much. Everywhere in the world, the private sector banks lend short-term. They provide working capital to SMEs, not capital for expansion, not capital for machinery, not capital for infrastructure. They don't do that. Now, what's happened elsewhere, these strong development banks from the public sector have made these SMEs so creditworthy that they've crowded in the commercial banks, the private sector. And that's what can happen here. If you're complaining about commercial banks, if you had a strong development banking function going, you'd find commercial banks really charging into this field. Anyway, I'll leave it there. I'm sorry I probably overshot. Mr. Tareen has looked at his watch 3 times, and I know if he does it once again, there'll be violence. So, with your permission, thank you very much. Thank you very much, Salim Raza Saab. In the interest of time, we are already behind 15 minutes, so I'm going to quickly invite Mr. Asif Qureshi. He is the co-founder and CEO of Optimus Capital. So, and he has 26 years of experience. He is a financial market guru, and he'll be talking on energy. Asif Qureshi Saab. Thank you. Sorry. Dear Assalamu alaikum everyone. Since I have just about 10 minutes to complete this presentation, I'll try to be as quick as possible. This is one slide which sort of summarizes the crushing weight that the economy is facing because of the energy sector. $26 billion of energy import in 2022,
which comprises about 49% of the total primary energy supply of the country, 1,070 billion rupees paid out to the power sector as fiscal support, cumulatively about 4.8 trillion rupees paid in since 2007 when the problem of circular debt in the power sector first emerged, 2.3 trillion outstanding power sector circular debt, about 720 billion rupees of gas sector circular debt, 25 billion units of electricity which are lost in T&D, about 300 MMCFD of natural gas which is wasted as UFG. So this is sort of the scorecard or the medical record of the health of the energy sector and the challenges it poses to the broader economy. We are facing an increasing reliance of energy imports. As you can see from the chart, it used to be about less than 30% 15 years ago. It's gone up to about 50% already, and this trend is increasing. Last year, total energy imports were $26 billion, comprising $18.3 billion of oil imports, $5 billion energy, LNG, and $2.7 billion worth of coal imports. So these numbers are clearly not sustainable. And one of the reasons why we're facing rising energy imports is because the local production of oil and gas has been declining. Since peaking 10 years ago in 2012 at about 4.4 billion cubic feet per day, our gas production is down to about 3,400 billion cubic feet per day. Oil production peaked a couple of years ago. It's down significantly from the peak levels, about 95,000 barrels per day. And these are not encouraging trends for the energy sector in general and for the broad economy in particular. Power sector is by far the biggest drain on the economy. Like I said before, we have invested about 4.8 trillion rupees cumulatively in shape of budgetary support. In the power sector, we still have an outstanding stock of circular debt of about 2.3 trillion rupees as of June 2022. And if you include the cost of budgetary support, obviously the government had to borrow to inject that money into the power sector. At 8%, that comes out to about another 2.3 trillion rupees. So cumulatively till June 2022, this sector has already cost 9.5 trillion rupees. And the recent numbers, if you take those into account, it would be in excess of 10 trillion rupees. So just imagine the kind of drag that this sector has had on the broader economy if the same resource had been spent elsewhere, the healthcare, education, infrastructure, economy would have been in a much better situation. Disco's inefficiencies cost about 800 billion rupees last year. The left graph actually shows excess T&D losses. T&D losses in excess of 10%. I've used a 10% benchmark because the efficient discos are generally below that 10% mark. And you can identify the more problem discos and how they compare with the other ones. So 10.6 billion units of excess T&D losses that we faced last year. If you multiply that by the average cost of generation for last year, that works out to about 170 billion rupees. Another 230 billion rupees lost in shape of under collection of billing. So whatever amounts that you're billing, you're not getting 100% payments from the customers. So collectively, 400 billion rupees lost there. Obviously, everybody's been complaining about the rising cost of power generation. And if you look at the trend in the initial years, or the last 10 years or so, we faced the problem of rising capacity payments. But in 2022, the trend actually changed because of the shooting up of international energy prices. The energy component of tariff has gone up dramatically. So certain things which you can control, but the other factors which are beyond the control of any government. And it's not just a situation which is unique to Pakistan. All the developing countries, even the developed countries, are facing a similar situation of rising cost of power generation. When we have this absurdly cheap gas in Pakistan, and which is actually encouraging its wasteful or rewarding wasteful consumption across all sectors of the economy. The biggest waste has actually been the residential sector, and that is actually reflected in the graph on the right-hand side. If you work out the average cooking load of the economy, the amount of gas that you require, so per household, that would be about 35 cubic feet. So you multiply by that by about 11.5 million subscribers. That works out about 450 million cubic feet per day. But the domestic sector is actually getting, during the summer months, about 650 million cubic feet per day. There's a lot of households
which are leaving their gas geysers running because the gas is so cheap. So we have to, so there's about 200 MCFD, billion cubic feet of gas that we are supplying on top of the basic requirement of cooking for every household. That's a huge number in terms of the economic waste that we are facing there. Then we have these, varied tariffs across different sectors. We have general industry tariff in the south of about $4.7 per million BTU. Export industry in the south is getting 3.7. Export industry in Punjab is getting $9. Imported RLNG, its cost in its tariff in the last month was about $13.4. So you have to benchmark the cost, the tariffs that we have for different categories versus its substitute, which is the imported LNG. So you can see by the difference between the bars as they compare with the RLNG bar, how much subsidy is being provided to these sectors. And these are not sustainable numbers. Energy infrastructure requires huge investment for modernizing it. Most oil refineries in Pakistan, although they name plate capacities in excess of 20 billion tons, they produce about 12 million tons or so. They're based on old technology, which is hydroskimming, which results in production of large amounts of low distillates, for example, furnace oil. In case of Pakistan, it's about 20-odd%. So we end up with a surplus furnace oil because it's being substituted in the power sector by cheaper sources of power generation. Then we have 70% of oil transportation taking place by road, which is not just a safety risk, but a lot of fuel is actually consumed in transporting fuel. So that's a waste as well. And in case of Karachi, we even we supply water to households using oil tankers as well, water tankers as well. So a lot of diesel is actually consumed in supplying water to households as well. Port infrastructure for oil import requires upgradation. Oil piers are not really in the best of health. We can't bring in large oil carriers because we don't have, our ports are not equipped to handle them, and those carriers will have much lower transportation costs. We don't have land-based LNG terminals, which we need, land-based storage for LNG, and that is the reason why we face these problems of certain shortages and surpluses in certain months of the year when it comes to LNG. We don't have, although we've been talking about it for the last 30, 40 years, no strategic petroleum reserves, which the country desperately needs. So those were the sort of a summary of the problems. We just proposed a 5-pronged strategy for restoring the viability or sustainability of the energy sector: restructuring, rationalization, indigenization, privatization, and electrification. So I'll take them on one by one very quickly. Restructuring of legal, regulatory, and governance. In fact, the entire institutional framework of the energy sector, which has not worked for the last 30 years, needs to be overhauled entirely. We have 2 divisions, petroleum division, power division, within the Ministry of Energy, but virtually they're operating as 2 independent competing ministries. Power Ministry is complaining to the petroleum division that you're not supplying it enough quantities of LNG. Petroleum division is complaining to the power sector, you're not lifting furnace oil, so the refineries are shutting down. So they're always fighting, writing letters to each other, and not working in coordination as a single ministry. So they need to be merged together, assimilated, integrated with one minister, one secretary of petroleum. Unification of regulators likewise is needed. Right now, I don't think that these regulators talk to each other, very frequently or at all. We need to appoint regulatory board members. Right now, we have provincial representatives. We need to replace them with functional roles, people who are qualified in their respective areas in technical, finance and other related fields relating to energy to be appointed on those board members. As board members, market-based compensation for all staff, capacity building across the board, along the entire institutional chain, overarching national energy policy, rather than having these bits and pieces of different policies for each individual segment of the energy chain, which don't hang together as one policy. We need one national energy policy, which should be overarching, and then we have these subcomponents. We need to have a roadmap for deregulation as well. National rationalization of energy prices, I've labored that point before. We require a major immediate increase in natural gas prices if the sector has to remain solvent.
There are massive amounts of receivables which are building up in the gas sector, which are affecting your exploration activities as well. Unified framework of pricing so that all energy substitutes are actually priced based on their heating value while accounting for the pollution effect of different fuels by levying certain carbon taxes on those fuels. Then we need to remove cross subsidies. One category of consumer is subsidizing the other category. That needs to be removed. The government must have direct or targeted subsidies in place. We require comparative industrial tariffs so that a lot of the load which has shifted or which could potentially come back to the grid must be brought back. So a lot of this captive generation, if the industries are offered reliable and competitive electricity supply, this load will come back to the grid. Then we need to reduce the capacity purchase price, the CPP curve of the power sector by flattening out the biggest component of capacity payments, which is the debt servicing component. So we need to extend the debt tenors of these power debts. About 45% of total capacity payment actually is actually from the public sector, especially these large nuclear power plants and hydropower plants. So the charity begins at home. So the government must start by reprofiling its own public sector debts before it moves down to the private IPPs. The indigenization of energy, I don't think that this point could be overemphasized. In the oil and gas sector, there are a lot of, in fact, there's one representative of Sui South here. I was talking to their MD. What they have done very wisely is that they've reached out to some of the E&P companies who have plugged some gas production because the field economics was not making sense, because as the field ages, you have more impurities in the field. The gas quality is no longer pipeline quality, and they need to invest a lot more just to ensure that energy can be supplied or put into the power system. So we need to enable production from existing non-producing gas fields by offering them lucrative prices or bilaterally negotiated rates. We need to encourage upstream activities, address the key issues, which is security, simplifying the approval process. There are a lot of red tape in getting the approvals from the government, and we need to offer better valid pricing, not just for conventional gas, but also for tight gas. Likewise, we need to expand the new frontier we formed in shape of thermal coal, used thermal coal for substitution of imported coal by blending it in existing power plants, in existing cement plants, carry out feasibility of using that coal for gasification purposes. Then we have massive, you're already aware of this, hydroelectric potential, wind potential, and solar energy potential. So this is the next, obviously, privatization, in my view, is a must for efficiency and investment. Two factors which are the biggest contributor to circular debt are higher T&D losses, excessive T&D losses of distribution companies, and under collection of billing, which account for about 400 billion a year. As per IEA, we require nearly twice as much investment in the T&D sector of the next 10 years than we did in the last 10 years. So all these things, operational efficiency improvements, massive investment which are required in the T&D sector cannot be done while these companies stay in the public sector. So we need to privatize them, bring in financially sound investors, and ensure that they are supported by strong operators. And I've presented here as a chart. A lot of people talk about, what will privatization do or bring it to efficiency of these companies. K Electric is a case in point. Over the last 10, 15 years, they have brought down, since privatization, their T&D losses from about 35% to just 15% this last year. This is the last slide, electrification of energy use. As they say, the new cliche is electricity is the new oil. So the conventional boundaries of different fuels being used, petrol being used only for transportation, gas being used for space heating, for water heating, a lot of these boundaries are now getting blurred, and there is a convergence of energy use taking place with a more prominent role of electricity. 20 years ago, we would make tea on a gas stove, warm up food on gas stove as well, but we do that using microwaves and electric kettles now. So then we need to consider electrification public transport. China in Shenzhen city was the first one to have 100% electric transport
electric public transport in terms of buses and taxis. Then solarization of tube wells, this can resolve Quetta electricity supply company's problem as well. 75% of electricity sold in Balochistan is actually going into tube wells because the water levels are declining by the year. So the key use of electricity there is for running tube wells, for irrigation, for water supply. So if we can resolve that issue, either by supplying water to that province or by solarizing their tube wells, it can help in resolving this problem as well. And for last but not least, solar geysers. Your gas consumption actually increases many times once you start running your gas geysers. If you can replace them with solar geysers, that will help a lot. So with that, I'll conclude. I hope I've done that in time. Thank you very much. Electricity is the new oil. Thank you very much, Asif Qureshi. Now we have participants. They are going to join us from the Zoom link. Mr. Jamshed from PTI, and he's going to talk on agriculture. So, Mr. Jamshed, you're ready to speak now. जमशेद साहब आप अनम्यूट करें अपने आप को प्लीज. जमशेद साहब बात कर रहा था कि इसमें ये आ रही आवाज. कैन यू हियर मी? हेलो, कैन यू हियर मी नाउ? हेलो हेलो हेलो, कैन यू हियर मी नाउ? हेलो हेलो. जमशेद साहब आप बोलें, शुरू करें बोलना. जमशेद साहब आप अनम्यूट कर दें अपने आप को, आपकी आवाज हमें नहीं आ रही. अनम्यूट करें अपने आप को. जी हेलो हेलो हेलो, कैन यू हियर मी? आ जी. कैन यू हियर मी? हेलो जी जमशेद साहब आप बात करें शुरू प्लीज. जी मैं कह रहा था कि इसमें यू कैन से कि इसमें पॉवर्टी एलिवेशन के लिए बड़ा मेजर रोल है इसका. और चौथी चीज जो है कि ये फूड फीड एंड फाइबर जी नेक्स्ट. और नेक्स्ट इसमें यह है कि इसमें दो केस स्टडीज हैं बड़े सादा से. ये थोड़ा सा फोकस करें कि पिछली गवर्नमेंट जो आई के गवर्नमेंट थी, आई के गवर्नमेंट में लास्ट 2 ईयर जब फूड महंगी हुई है तो वर्ल्ड में सारे मुल्कों ने परफॉर्म करने की कोशिश की. तो ये 5-6 जो बड़ी फसलें हैं बल्कि 7, इसमें अगर देखें तो 2 साल का, चूंकि एक हार्वेस्टिंग टाइम डिफरेंट होता है, लिहाजा हमने 2 साल का डाटा ले लिया. 2 साल का जो डाटा इसने पे जाए जी, मुजम्मल नेक्स्ट पे जाए, मुजम्मल नेक्स्ट साइड पे जाए. इसको ये अगर देखें कि इसमें 2 साल के डाटा में जो वर्ल्ड की ग्रोथ है वो आप और पाकिस्तान की ग्रोथ, तो तमाम फसलों में कोई 5, 7, 8, 9 टाइम ग्रोथ हमारे यहाँ ज्यादा है. ये केस स्टडी है
کہ یہ جو اسٹیگنٹ گروتھ تھی پاکستان میں زراعت کی کئی سال رہی، لیکن یہاں آپ دیکھیں تو 2 سال میں آپ یو کین سے کہ آپ بالکل معجزے کر سکتے ہیں، اور ہم نے کیے ہیں. جی نیکسٹ کر دیں. اور دوسرا، ابھی اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد جب فارمر کو سپورٹ ختم ہوئی ہے تو پی ڈی ایم میں اگر کسان پیکج آیا ہے تو سپورٹ جب ختم ہوئی ہے اور انپوٹس مہنگے ہوئے ہیں تو اس کا رزلٹ یہ آیا ہے کہ ٹریکٹر کی 36%، ڈی اے پی کی 41%، یوریا 9%، پوٹاش اینڈ ڈیزل. دیکھیں یہ ربی خریف کراپ میں جو آپ کی نارملی کیش کراپس ہیں جنہوں نے آپ کو فارن ایکسچینج ریزرو دینے ہیں یا انڈسٹری کے را مٹیریل ہیں، وہ ساری کراپس میں آپ کی یہ نیچے چلی گئی ہے گروتھ. آپ کہہ لیں کہ پروڈکشن ایک ہی سال میں یا 6 مہینے کے اندر اندر جو ورلڈ میں زیادہ گروتھ کر رہی تھی اس کی نسبت ساری کی ساری ریورس ہو گئی ہے. اس میں یوز ریورس ہوا ہے. جی نیکسٹ. اب اس کا نتیجہ یہ جب ان پٹ لو ہوا ہے، ان پٹ کا یوز لو ہوا ہے، تو اب ایف سی اے مین کے یو کین سے کہ فائنانس کمیٹی آن ایگریکلچر، فائنانس کمیٹی آن ایگریکلچر کی جو لیٹسٹ ڈیٹا ہے کہ یہ ہمارے ایسٹیمیٹس ہیں پیداوار کے، اس میں کاٹن 35% کم آ رہی ہے، میز 3% ہے، شوگر کین 8% ہے، رائس 35%، مونگ 30% اور چلی 7%. اسی طرح ویجیٹیبل ہے. سو جو 2 سالوں میں 2600 ارب روپے کی انکم بڑی تھی کسان کی، ہم سمجھتے ہیں کہ اس سال میں کوئی 1000 ارب روپے کی انکم دوبارہ کم ہو جائے گی. نیکسٹ. اب چیلنجز میں یہ ہے کہ ہمیں جو فارمر ہے، نارملی ان پڑھ لوگ ہیں، تھوڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان لوگوں کو ہر وقت سپورٹ کی ضرورت ہے. ان کے ساتھ کمیونیکیشن میں رہنا، ان کو آپ کا کارڈ پروڈکشن کم کرنا، موٹیویٹ کرنا اور کنسسٹنٹ گائیڈنس کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے چیلنج یہ ہوگا کہ جس طرح ہمارے ہاں جو مین ایکچوئل چیلنج اگر دیکھیں تو ہم 2100 کیلوریز کھا رہے ہیں پر کیپیٹا پر ڈے، اور ورلڈ ایوریج جو ہے وہ 2900 ہے. سیکنڈلی یہ کہ ہماری 4.8 ملین پاپولیشن بڑھتی ہے. سو دونوں چیزوں کو جب ہم اکٹھا کرتے ہیں تو اگلے 7 سال میں اگر دیکھیں تو ہمیں 70%. اور تیسری بات امپورٹ، سیلف ریلائنس کے لیے یا سیلف سفیشینسی کے لیے ہمیں 70% اگر پروڈکشن بڑھائیں 7 ایئر میں تو پھر بات بنتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کمفرٹیبلی ہم 5 to 6% جی ڈی پی گروتھ کر سکتے ہیں زراعت میں، اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ لو کاسٹ پروڈکشن، موٹیویشن اور پرماننٹ گائیڈنس. دوسرا یہ کہ لو ویلیو کراپ سے، کیونکہ ہمارے پاس لیبرز کافی ہے، لو ویلیو سے ہائی ویلیو کی طرف جائیں. اور تیسرا یہ کہ جینیٹک امپروومنٹ ہمیں کراپس میں اور اینیمل میں کرنی پڑے گی. اور امپورٹ سبسٹیٹیوشن، جو امپورٹ ہم بہت مہنگی کا ہیں، اور آگے کی طرح ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو اسٹارویشن سے نہیں بچا سکتے جب تک اس میں ہم آپ کہہ لیں کہ امپورٹ سبسٹیٹیوشن میں جاتے. فارمر منڈی کا کنسپٹ بڑا شاندار، یہ وزیر اعظم کا پلان تھا، اس کا ویدر لمبا ہے، آلموسٹ 8 مہینے کا ہے. 8 مہینے کا جو ہاٹ ویدر ہے یہ نمبر آف کراپس ہمارے ہاں زیادہ کر سکتا ہے. اور جن کراپس کو ٹھنڈ زیادہ چاہیے وہ کراپس ہمارے ہاں پیداوار تھوڑی دیتی ہیں. گندم ہے یا آلو ہے، یہ پیداوار تھوڑی دیتے ہیں، اسپیشلی گندم ایک ہمارا ویک اور ایپل فوڈ یہ ہے. سو ہمیں ڈائٹری ریکوائرمنٹ جب ہم چیز میں کیلوری کتنی ہے، پروٹین کتنے ہیں اور فیٹ کتنے ہیں، تو ڈائٹری نیکسٹ.
आ रहा है मुझे का महंगाई का म्यूट कर दें, इनको म्यूट कर दें। तो महंगाई का जो नजर आता है, आई एम रियली सॉरी, इनको म्यूट कर दें। अब मैं जो है, वी हैव अ नेक्स्ट स्पीकर मिस्टर असफर एहसन एंड ही इज गोइंग टू टॉक ऑन इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट ओवरऑल। तो असफर, ओवर टू यू। Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and very good evening. My today's topic is investment and business climate in Pakistan. शुरू में शौकत तरीन साहब और सलीम रजा साहब ने एक ओवरव्यू दिया है पूरी इकोनॉमी का, तो मैं उस डिटेल्स पे तो नहीं जाता. आई विल टेक ओनली 3-4 minutes and I will share only a few points related to investment climate. हमारी जो FDI का इनफ्लो है पाकिस्तान में लास्ट फ्यू ईयर्स से वो अराउंड विद $3 billion का है, इनफैक्ट लेस देन $3 billion. बट द रियलिटी इज कि पाकिस्तान में इस वक्त जो पोटेंशियल है वो हर इंडस्ट्री में कई $1 billion का इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल. इसी तरह से जब हमने लास्ट गवर्नमेंट में BOI की तरफ से बहुत सारी कंट्रीज के साथ काम किया और ये डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस थे based on our multiple meetings with several investors and the governments. तो हर कंट्री से जो बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज थी जिसमें सऊदी अरेबिया के साथ हमने बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी काम किया. स्टिल आई एम पर्सनली वर्किंग विद द सऊदी गवर्नमेंट ऑल्सो. कुवैत है, UAE है, चाइना है, नेदरलैंड्स हैं, बहुत सारी अदर कंट्रीज हैं. 8-10 कंट्रीज थी जिसपे हमारा बहुत खास फोकस था. और अगर एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी इसकी हमने जो बनाई थी और उसको अगर लॉन्ग टर्म पे फॉलो किया जाए, उस पर इम्प्लीमेंट किया जाए, तो हर कंट्री से कई $1 billion का एनुअल आपका पोटेंशियल है. द प्रॉब्लम इन पाकिस्तान इज कि जो कंटिन्यूशन ऑफ गवर्नमेंट्स है, दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज. द कंटिन्यूशन ऑफ पॉलिसीज इज द बिगेस्ट चैलेंज. तो इन्वेस्टर को क्या चाहिए होता है? इन्वेस्टर को कंटिन्यूशन ऑफ पॉलिसीज चाहिए होती है. इन्वेस्टर को एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए होती है, चाहे वो लोकल इन्वेस्टर हो चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टर हो. और इन्वेस्टर को एक हैंड होल्डिंग चाहिए होती है, नॉट ओनली फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर बट ऑल्सो विद ऑल द कंसर्न स्टेक होल्डर्स, जिसमें मिनिस्ट्रीज भी हैं, जिसमें रेगुलेटर्स भी हैं, जिसमें और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं. हर इंडस्ट्री के डिफरेंट रेगुलेटर्स स्टेक होल्डर्स होते हैं. सो मैं आपको एक बात सिर्फ कहना चाहूँगा, जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस की अगर हम बात करते हैं, वी आर नाउ इन नवंबर 2022 और फरवरी 2022 में आज से कोई 8-10 महीने पहले ओवरसीज इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स है OICCI, which is the most credible chamber in Pakistan and the oldest chamber in Pakistan. And there are 207 multinationals from 35 different sectors are the members of this chamber. ये हर 2 साल में एक इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस सर्वे रिलीज करते हैं. एंड दिस इज द मोस्ट ऑथेंटिक सर्वे इन पाकिस्तान बिकॉज ये मल्टीनेशनल्स होती हैं, उनके नंबर्स बड़े क्लियर होते हैं और जो उसमें इंडिकेटर्स नजर आते हैं उसकी बेस पे वो सर्वे आता है, उन रिकमेंडेशंस देते हैं. तो फरवरी में मुझे याद है शौकत साहब मौजूद थे उस मीटिंग में, तो प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ हमने एक मीटिंग की जिसमें OICCI की सारी मैनेजिंग कमेटी आई और उसकी जो पूरी रिपोर्ट है वो अखबारात में पब्लिश हुई. आप सब ने उसको पढ़ा, उसको देखा. और जो लास्ट 2 ईयर्स का, मैं सिर्फ लास्ट 2 ईयर्स के सर्वे की बात कर रहा हूँ, कि अगर आप उस सर्वे को देखें तो उसमें जो मेजॉरिटी इंडिकेटर्स थे वो सब पॉजिटिव थे. वो OICC के वेबसाइट पे गूगल आप करें, वो जो रिपोर्ट है वो मौजूद है. और उसमें जो प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग हुई तो जो उनकी रिकमेंडेशंस थी उस पर उनकी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक सारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, FBR ने, SECP ने, BOI ने और जो कंसर्न इदारे थे उन सब ने अपना काम शुरू किया. तो आज की अगर हम बात करें, इन लास्ट फ्यू मंथ्स, स्पेशली इन लास्ट फ्यू वीक्स, आई हैड डिस्कशन विद सेवरल इन्वेस्टर्स फ्रॉम आउटसाइड पाकिस्तान जिनके साथ हम मीटिंग्स करते थे ऑफिशियल लेवल पे. बहुत सारे मैं ग्लोबल CEOs को मैं मिला भी और उससे गुफ्तगू हुई इन लास्ट 1 month जो पाकिस्तान में मल्टीनेशनल्स ऑपरेट कर रही हैं. दे ऑल आर एक्चुअली वरीड एंड वरी इज नॉट रिलेटेड विद द फॉरेन इन्वेस्टर ऑल्सो
बट जो हमारा लोकल इन्वेस्टर है, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है, बिकॉज के, और मेरा ये पॉलिटिकल व्यू नहीं है, ये मैं जो व्यूज शेयर कर रहा हूँ ये एज अ प्रोफेशनल शेयर कर रहा हूँ कि जो एक सिस्टम चल पड़ा था, जो इन्वेस्टमेंट्स की तरफ हम जा रहे थे, उनको अट्रैक्ट कर रहे थे, इट्स अ कंप्लीट प्रोसेस, ये चीजें ओवरनाइट नहीं होती हैं. आई ज्वाइंड लास्ट ईयर एज द चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट. आई वर्कड ओनली फॉर 6 months एंड मैं आपको बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बात बता रहा हूँ. शौकत साहब को भी सारी चीज़ें पता हैं, मैं इनके साथ बहुत क्लोजली काम करता था, मेरे उस्ताद भी हैं. बहुत सारी कंट्रीज से और बहुत सारे इन्वेस्टर्स से हमारी चीज़ें बहुत पॉजिटिव पेस पे चल रही थी और हम बड़े ऑप्टिमिस्टिक थे. मुझे याद है खालिद मंसूर साहब भी होते थे जो सीपैक को हेड करते थे. हम लोग बात करते थे कि यार शायद नेक्स्ट 5-6 months में हम ये इतने $1 billion की इन्वेस्टमेंट्स को मटीरियलाइज करेंगे और फिर ये प्रोसेस होगा जो चल पड़ेगा. सिर्फ सऊदी अरेबिया के साथ अगर मैं बात करूं, वी हैड 18 मीटिंग्स ड्यूरिंग माय 6 months BOI टेन्योर, और जिसमें लास्ट मीटिंग मेरी उनके इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर खालिद अल फली से हुई थी ताशकंद में. दिस वाज ओवर 2 hours मीटिंग. उनकी तरफ से 3 लोग थे, हमारी तरफ से 2 लोग थे, एंड हमने उसमें पूरी एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाई थी. 8 सेक्टर्स से, वो सारे सेक्टर्स भी शौकत साहब को पता है, और उन सेक्टर्स में हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उनको दे रहे थे, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे हम काम कर रहे थे. कुछ G2G थे, कुछ G2B थे, कुछ B2B थे, और जो हमें पोटेंशियल नजर आता है उस पर मेरा एक आर्टिकल भी आया है. अगर आप बिजनेस रिकॉर्डर में 24 अक्टूबर अभी जो गुजरी है उस पर आर्टिकल देखें, मैंने पाकिस्तान के इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट और उसमें एक सऊदीया की केस स्टडी दी है पूरी. और ये सारी एजम्पशंस बेस्ड नहीं है, सारे डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस हैं, ऑब्जेक्टिव नंबर्स हैं, सारा कुछ है. तो ये एक पोटेंशियल हमारा था, हम इन तमाम चीज़ों को मटीरियलाइज कर रहे थे. एंड आई हैड अ मीटिंग विद द इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया 2 weeks बैक इन रियाद, एंड आई हैड अ मीटिंग विद द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया ऑल्सो. सो सऊदी का जो इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर है वो बहुत बड़ा पाकिस्तान का सेल्समैन कहता है अपने आप को. ही इज़ अ वेरी थॉरो जेंटलमैन. ही वाज चेयरमैन अरामको अर्लियर, एंड बहुत सारी जो उसकी गुफ्तगू थी वो यही थी, जो कंटिन्यूशन ऑफ पॉलिसीज और कंटिन्यूशन ऑफ जो पूरा एक सिस्टम चलता है. और उस पर इसका फेयर ये था कि कुछ इन्वेस्टर्स हैं जिनके साथ हमारी बात चल रही थी कि वो कुछ इंडिया की तरफ देख रहे हैं, बिकॉज के किसी लोकल इन्वेस्टर को या किसी फॉरेन इन्वेस्टर को जो चीज़ चाहिए वो एक क्लैरिटी चाहिए. आज डॉलर का रेट सेट नहीं है, हमें नहीं मालूम कि 6 महीने बाद डॉलर का रेट क्या होगा. मैं कराची में कुछ बिजनेसमैन को बैठा हुआ बात कर रहा था, ये डे बिफोर यस्टरडे की बात है, एंड ऑल इंडस्ट्री कैप्टन्स, बट ओवरऑल सेंटिमेंट इज वेरी नेगेटिव. सो माय 3 or 4 points are, we need political stability in this country. Under current scenario जिधर हम खड़े हैं इस वक्त, नवंबर 22 है आई थिंक आज 22, और नेक्स्ट 3 to 4 months में आइडियली अगर फरवरी मार्च में we should go for the elections. And again, this is not a political statement. This is what I believe as a professional. I'm also doing business. I'm interacting with whole Pakistan, all the top CEOs, all the top business leaders in this country, all the major foreign investors outside Pakistan. What we need is free and fair elections in this country. Because मेरा एक बहुत फेयर असेसमेंट है, ये मेरी बड़ी क्रिटिकल इवैल्यूएशन है कि टिल अगस्त सितंबर तक हम वेट नहीं कर सकते, ये कंट्री वेट नहीं कर सकती. तो सारे स्टेक होल्डर्स जो इस कंट्री के हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हमारी मिलिट्री लीडरशिप है, सबको एक पेज पर होना चाहिए और इस मुल्क के लिए होना चाहिए. पॉलिटिक्स को साइड पर रख के इस मुल्क के लिए आपको बैठना चाहिए कि फरवरी मार्च में आपको फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने चाहिए. उस पर फिर जो भी गवर्नमेंट आती है उसको आप एक्सेप्ट करें, 5 साल का टाइम दें. ये जो 3-3 साल में आप गवर्नमेंट को हिला देते हैं ना, ये चीज़ कभी भी इन्वेस्टमेंट को सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ लेके नहीं जाएगी. और जो एक और पॉइंट है वो ये कि सारी चीज़ों को एक तरफ रख के जो इकनॉमी है आपकी, जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है, उसमें आपको जो कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर को चाहिए, चाहे वो अगेन लोकल इन्वेस्टर हो चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टर हो, उसके लिए आपको वो मेजर्स लेने, वो आपको इकदाम करने. पॉलिटिक्स आपकी होती रहेगी, पॉलिटिक्स आपकी चलती रहेगी,
लेकिन खुदारा इसके लिए मेरा मौक़िफ़ ये है कि वी शुड गो फॉर इलेक्शंस, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, और उसके बाद जब तक ये सिलसिला 5 साल का फिर शुरू नहीं होता, ये इन्वेस्टमेंट में आपको बहुत तकलीफ से बट अगेन बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से बता रहा हूँ कि नेक्स्ट 7, 8, 9 मंथ्स आपको मेजर फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं देखेंगे। और जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं जिनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो चल रहे हैं, लेकिन न्यू इन्वेस्टमेंट्स, न्यू प्रोजेक्ट्स पे अगर आप देखें तो कोई बहुत काबिल ज़िक्र कोई चीज़ नज़र नहीं आती। लोग फेयर में हैं, लोग क्लैरिटी नहीं है, और जो ओवरऑल एनवायरनमेंट है, दिस इज़ एक्चुअली वेरी अलार्मिंग फॉर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के पास आज टाइम है, हम बड़ी बात करते हैं कि हमारी जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, हमारा बड़ा पोटेंशियल है, हर इंडस्ट्री में पोटेंशियल है, हर चीज़ में पोटेंशियल है, लेकिन आप यकीन जाने दुनिया जिस स्पीड पे चल रही है, हमारे पास आई थिंक ये कुछ साल हैं। अगर हमने अपना किबला काबा सही नहीं किया, अगर हमने एक सही स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन पे काम नहीं किया, पाकिस्तान दुनिया से कॉम्पीट नहीं कर सकेगा। दुनिया में छोटी छोटी कंट्रीज़ में उज़्बेकिस्तान गया हुआ था और बड़ी अच्छी हमारी रिलेशनशिप थी उज़्बेकिस्तान के साथ। हमारा उनके प्रेसिडेंट आए थे अपना पूरा डेलीगेशन लेके, फिर उसके बाद एक ऑफिशियल विजिट पे मैं भी गया था। मैं भी कुछ उज़्बेकिस्तान गवर्नमेंट के साथ काम कर रहा हूँ और हमारे बहुत सारे इन्वेस्टर्स वहाँ पे जा रहे हैं, मैं भी कुछ लोगों को फैसिलिटेट कर रहा हूँ। लेकिन जो एक छोटी सी कंट्री उज़्बेकिस्तान है, अगर आप उसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करें, उसको स्टडी करें, जो लास्ट 3-4 ईयर्स में वहाँ पे चेंज आया है, जिस डायरेक्शन पे इस वक्त वो जा रहे हैं, जिस तरह से वो इन्वेस्टर्स की हैंड होल्डिंग करते हैं, हमें उन खतूत पे चलना होगा। और इसके लिए आपको एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप चाहिए, कंटिन्यूशन ऑफ पॉलिसीज चाहिए, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन द कंट्री चाहिए। ये वो तमाम फैक्टर्स हैं जो इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस देते हैं। अदरवाइज लिप सर्विस से आप 6 महीने, 10 महीने, साल गुजार सकते हैं, उससे ज़्यादा आप काम नहीं कर सकते। बट हमें अगर आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए देखना है, इस मुल्क का फ्यूचर देखना है, तो हमें इकोनॉमिक रोड मैप के लिए, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज के लिए एक पेज पर आना होगा और उसमें हमें पॉलिटिक्स को साइड पे रखना होगा। So this is my concluding remark, and I appreciate the organizers of this seminar for hosting this academic interaction, and I hope कि इसकी जो आउटकम आएगी और जो इसकी आप अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, जो इस वक्त के डिसीजन मेकर्स हैं वो उसको कंसिडर करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। Thank you very much, Aswar. We cannot wait for another 9 months. We need election. Otherwise, the boat will be missed. This is a message from former Board of Investment Chairman, and he's the president of MAP also. So he's very much in touch with businesses locally and internationally. Now we have the last speaker, and then we will have Chairman PTI Imran Khan. I would like to invite Mr. Matthias. He is a long-term foreign investor in Pakistan, and he has been investing in Pakistan for the last 15 years. So he will going to give us the perspective from outside how the international investors are looking Pakistan at the moment. Over to you, Matthias. Thank you, Musamil, and thank you for inviting me here today. I've been investing in emerging markets for 26 years now. I was lucky enough to be among the handful Swedes that introduced Russian equities to the broader public in the mid-90s. I came across Pakistan in 2005, and just like most other foreign investors at the time, I actually did not think it was investable. But I quickly realized it was a much more developed capital market than many other Asian markets at the time. I traveled to Pakistan the first time in 2008, and I was amazed by the managements I met. Pakistan, in my view, at this time was significantly ahead of Vietnam. So in 2011, I founded Tundra, and we launched the first daily traded Pakistan fund that had been launched for more than a decade. We were lucky with the timing. Between the years 2012 to 2016, our fund was among the top 10 equity funds in Sweden every year. In 2012,
for a fact when foreign portfolio inflows in Pakistan turned positive. It was Swedish retail investors that constituted 2/3 of the net foreign inflow that year. We have a lot to thank Pakistan for. Pakistan allowed us to grow Tundra into a leading frontier markets boutique. Today, we manage one single global strategy where Pakistan is the second largest country weight. And despite all the problems and disasters of recent years, Pakistan is still the top contributor to our global frontier fund's performance. And it's been the major reason why we are today the overall highest ranked fund globally in the frontier category. Between the start of 2009 until late October 2014, Pakistan attracted $1.4 billion in foreign portfolio inflows to its equity market. Since late 2014 and until today, the same investors have sold $2.7 billion worth of Pakistan equity. So what happened? First of all, it's important to understand that Pakistan has not been alone in its suffering. Small emerging markets have generally shown a similar pattern. With few exceptions, Indonesia and Vietnam are two of them. All markets have seen outflows as foreign investors have focused on opportunities at home, given the very low rate environment. During the last 8 years of outflows, the MSCI Frontier Markets Index, excluding the GCC countries, is down 18% versus Pakistan's 35% in US dollars. A second reason was, of course, that most small emerging markets took a huge hit when COVID came up on the agenda, given that you have limited room to provide support to your populations. And of course, the final hit, and probably most painful one, was the rise in commodity prices and food prices that have been prevalent since the Ukraine-Russia conflict started. That said, although you have a lot of general reasons for why Pakistan has been in trouble, you also have some specific issues. I feel, as a kind of an outsider who has been watching this country for the last 17 years, sometimes I suspect that the fact that Pakistan was one of the first Asian countries that implemented proper judicial and civil servant structures eventually became its curse. Because the same structures that had been built for your people was improperly used by the wrong people, and mismanagement became chronic. As mismanagement and corruption became prevalent, the young people at the time got the wrong role models, and it was allowed to become a normal routine and actually a necessity to succeed. It has not destroyed the country, but it has slowed down your progress significantly. A country, however, is not defined by its leaders, but by its people. We meet so many amazing people when we travel Pakistan, who run successful and honest businesses and who really want what is best for Pakistan. A key component when we do research is to assess in what way a potential portfolio company benefits society. The reason is very simple, because after corporate governance risk, state governance risk, meaning the risks of sudden changes in regulations, the taxman knocking on your door, is the biggest risk in our markets. So if we invest in companies that help the local community forward, or if I can put it that way, make the politicians look better than they actually are, this risk is significantly reduced. In Pakistan, we find many great companies, but what we want going forward is for these companies to have breathing room to grow. Being a politician does not have to be very hard. You need to set rules that everyone understands and provide a stable playing field so that the great companies can find their way. Pakistan has so many talented people who will then do the job for their leaders. In developed countries, the human capital, which is the net present value of all future salaries, makes up approximately 70% of these countries' wealth. And given Pakistan's huge population base and favorable demographic, it makes sense to put a lot of efforts going forward on education in general and technology in particular. If that happens, Tundra will not have a handful of potential investments, but eventually thousands. When I meet locals,
Unfortunately, I often meet the perception that Pakistan is somehow doomed. It's forever to be an outcast. And yes, the general perception of Pakistan internationally today is poor. But this has been the case since the late 90s. A majority of the world's investors today still believe Pakistan is uninvestable, and you won't be able to change their minds anytime soon. My recommendation here is to hide that frustration that this fact might inflict, and instead focus on the surprisingly many foreign investors that have a much more balanced view of Pakistan than the common narrative in Western media normally presents. They might not be as loud, but they outnumber the critics. And these investors will return post the current crisis, provided that there is a constructive political environment focusing on the way forward. They will appreciate sensible economic policies you implement, but they will also be concerned if there are signs of confrontation. When we invest, we want to spend 80% of our time on the 20% most important parts. If Pakistan reaches $3,000 GDP per capita, you will create additional wealth for your country of $500 billion. I would say that is significantly more than you can ever claw back from historical wrongdoings, and thus, it seems to me, is where you should spend 80% of your time going forward. As politicians, every single constructive measure you implement will take the country one step forward towards a better scenario. So be patient. For someone who launched a fund management company which took a huge bet on Pakistan, you might believe I'm an optimist. In fact, I would say that I'm a very risk-averse and conservative investor. The key strength for me has instead always been about measure opportunities versus current expectations. And expectations on Pakistan at this stage is at an all-time low. What happens during the next 6 months is unknown. But what is sure is that investors expect the worst. So instead of focusing on the negatives in the past, I hope that whichever leadership comes after the election will focus on the way forward. Which path has Pakistan chosen by this time next year? And just to conclude, politicians, you don't have to be flawless. History shows that politicians have plenty of room to make mistakes. If people trust them, they will fill in the gaps for them. And keep in mind the numerous occasions countries have risen from the hardest of crises. My old mentor used to say, every day starts at 100%. And that is the mindset I hope to see from whichever government comes into power after elections. And I think compared to the current situation today, you have absolutely everything to win. Thank you. Thank you very much, Matthias, and thank you for your time. The punchline from Matthias is, next 6 months is unknown, and we have to make sure we should not waste time. My next panelist is none other than Chairman Pakistan PTI, Imran Khan Sahab. Please give him a warm welcome before he addresses. ठीक है, ओके। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शौकत तरीन, मैं आपको और सारे जो पैनलिस्ट हैं, पहले तो मैं सुन रहा था आपकी ये जो आज आपने सेमिनार में इकोनॉमी के ऊपर बातचीत की है, तो पहले तो मैं आप सबको, जिस तरह आपने डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर बात की इकोनॉमी की, तो मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। देखिए, मैं जो इकोनॉमी के हालात हैं, पहले मैं आपको सबको रिमाइंड करवा दूं कि हम जब 2018 में आए थे तो हालात तब भी बहुत बुरे थे, और जो सबसे बड़ा मसला हमारे सामने था वो करंट अकाउंट डेफिसिट था।
क्योंकि पाकिस्तान फंसता इधर आके है। हमने कभी अपनी एक्सपोर्ट्स के ऊपर जोर नहीं लगाया। हमारे सामने ईस्ट एशियन टाइगर्स बने, चाइना को हमने देखा पिछले 30 साल में आगे बढ़ते हुए। सारों ने बेसिकली वेल्थ क्रिएशन की एक्सपोर्ट बढ़ा के। यहां तो मैंने कभी किसी को मुझे कभी किसी ने नहीं बताया कि जनाब सारे मुल्क को वेल्थ क्रिएशन एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए सारे मुल्क को तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी एक्सपोर्ट्स ही नहीं बढ़ेंगी तो ये जो मर्जी आप कर लें, जैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी फंस जाएगा जाके करंट अकाउंट आपका, और वो फिर जब डेफिसिट होता है फिर वो सारा वो बूम बस्ट साइकिल फिर से शुरू हो जाता है। तो हमारा तब बड़ा था, और मुझे याद है कि बड़ी मुश्किलों से हमने पहला 1 साल सरवाइव किया। और मुझे अभी भी याद है कि अगर हमें सऊदी अरेबिया, यूएई और चाइना हेल्प ना करते तो हमारे पास पैसे नहीं थे अपनी लायबिलिटीज देने के लिए। तो वो बड़ा टाइमली उन्होंने हमारी मदद की, और उसके बाद जैसे हम थोड़ा स्टेबलाइज हो रहे थे तो फिर कोविड-19 आ गई। तो कोरोना का मैं सिर्फ आप सबको कहना चाहता हूं कि वो भी एक बहुत बड़ा क्राइसिस था दुनिया के अंदर। आप जब देखें कि कैसे लोगों ने कोप किया है कोविड-19 से, तो जो हमारा उस वक्त था वो हमारा एक बहुत ही बड़ा डायलेमा था सामने, कि अगर हम लॉकडाउन लगा देते, जो उस वक्त मेरे ऊपर सारी दुनिया से, यानी मुल्क से प्रेशर था, लेकिन सारी दुनिया में देख रहे थे कि इटली, स्पेन और फिर इंग्लैंड के ऊपर लॉकडाउन लग रहे थे, तो मुझे सारे जोर लगा रहे थे कि जी आप भी लॉकडाउन लगाएं, और बड़ी तनकीद हुई मेरे पे। लेकिन मेरा तो बेसिक सवाल ये था कि पहले हमारी इकोनॉमी हमने 1 साल स्टेबलाइज करते करते उसको बिल्कुल स्क्वीज कर दिया था, हमारी ग्रोथ रेट बिल्कुल गिर चुकी थी। तो उसके बाद हम कोविड में अगर शटडाउन कर देते अपनी इकोनॉमी, तो यहां तो लोगों ने भूखे मर जाना था। और प्लस कभी भी किसी ने मुझे जवाब नहीं दिया। मैं सबसे पूछता था कि दिहाड़ीदार का क्या बनेगा, जो पैसा कमा के बच्चों को खिलाता है, तो किसी के पास जवाब नहीं था इसका। एनीवे, वहां हमने बड़े बोल्ड फैसले किए, और मुझे बड़ा फख्र है अपनी सारी टीम पे कि हमने बड़े इनोवेटिव किस्म के फैसले किए। मैंने खुद फिर वो जो IMF की हेड थी उनको मैंने खुद टेलीफोन करके बड़ी मुश्किल से कन्विंस किया कि हमें जो IMF का प्रोग्राम है उससे हमें आपको थोड़ी लीवे देनी पड़ेगी, नहीं तो हमारे यहाँ लोग भूखे मर जाएंगे। और उससे फिर कन्विंस करके हमने अपनी एग्रीकल्चर के ऊपर पूरी खासतौर पर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए फिर हमने उनसे खास रियायत ली, इंसेंटिव्स लिए, और हमने हमारी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री थी उसके अंदर जो ग्रोथ हुई उससे एक्चुअली रोजगार भी बचा दिया लोगों का, और हमारी जो ग्रोथ रेट थी उसको भी आहिस्ता आहिस्ता पिक करना शुरू किया। और जो तीसरा और चौथा साल था उसके अंदर डिस्पाइट कोविड हमारी जो मेंशन किया होगा 5.7% ग्रोथ रेट थी, और जो आखिरी साल में 6% थी। तो हम एक बड़े यानी डबल क्राइसिस से निकले थे। एक तो पहले ही हमारा जो मैसिव करंट अकाउंट डेफिसिट था, और दूसरा कोविड का जो मसले आए। अब क्वेश्चन सबसे पहले तो ये जरूर पूछना चाहिए कि उधर से जब ये रजीम चेंज की गई तो मुझे अभी भी समझ नहीं आई कि जो रजीम चेंज करने वाले थे क्या उन्होंने रियलाइज किया कि सारी दुनिया में कमोडिटी सुपर साइकिल आया हुआ था, एनर्जी प्राइसेस सारी दुनिया में ऊपर चले गए थे, और क्या उन्होंने रियलाइज नहीं किया कि हम बड़ा एक बैलेंसिंग एक्ट कर रहे थे पाकिस्तान में। हर रोज मैं जब ऑफिस जाता था तो सबसे पहले हमारी होती थी कि हमारे रिजर्व्स का क्या हालात है, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, यानी खौफ ही होता था कि हम अपने उसको करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल करें, क्योंकि तेल की कीमत $100 से ऊपर चली गई थी। लेकिन जिन्होंने जब ये हमें पता चला कि साजिश हो रही है, तो मैंने खुद और फिर मैंने शौकत तरीन को भेजा बताने के लिए न्यूट्रल्स को कि देखें अगर आप जो वाकई कह रहे हैं आप न्यूट्रल रहेंगे और इस साजिश पे, तो ये कंट्रोल नहीं होगी इकोनॉमी किसी से। ये इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन का, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी इकोनॉमी में पड़ेगा, और वो आगे फ्रेजाइल किस्म का बैलेंस है और सारी दुनिया में इश्यूज हैं। तो ये जो
इकोनॉमिक मैनेजर्स जिनको हमारी जगह लाया जा रहा है, इनका तो ट्रैक रिकॉर्ड 30 साल का है। वो कौन सा गोल्डन एरा था जब इन्होंने कोई इकोनॉमी को बड़ा अच्छा संभाला था? क्योंकि 90s के अंदर डॉक्टर इशरत हुसैन अपनी किताब में लिखते हैं कि 90s से पहले पाकिस्तान तो सारे सब कॉन्टिनेंट में इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पाकिस्तान के बेहतर थे। 90s में हम पीछे जाना शुरू हुए जब से ये दो खानदान आए हैं। तो इनका कौन सा ट्रैक रिकॉर्ड था कि इन्होंने किसी मुल्क को इकोनॉमी को संभाला था कि इनको फिर लाया जा रहा था? और वही जो आज हुआ, आज जो हुआ ये होना ही था। और मैंने इससे 5-6 महीने पहले मैंने यही प्रेडिक्ट किया था कि ये जो गवर्नमेंट आई है, इन्होंने मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ ले जाना है। और मेरे ऊपर उन्होंने कहा जी आर्टिकल 6 लगा देना चाहिए, गद्दार है ये मुल्क का। तो आज अब जिधर हम खड़े हैं, क्वेश्चन तो अब ये है कि इससे निकलना कैसे है। नंबर 1 चीज, जब तक इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, कोई भी आप जीनियस ले आए इकोनॉमी का, वो अब कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी डायरेक्टली सारी दुनिया के अंदर वो डिमांड करती है सर्टेनिटी। जब तक सर्टेनिटी नहीं होती, बिजनेसेस हम सब जानते हैं, और आप तो खैर मेरे से बेहतर जानते हैं इकोनॉमी जहां बैठे हुए हैं, तो वो जब तक एक इकोनॉमी के अंदर लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि मैं आज अगर पैसा इन्वेस्ट करूंगा तो आगे अगले 6 महीने, 1 साल, 2 साल तक माहौल क्या होगा मुल्क का, लोग इन्वेस्ट नहीं करते। तो आज जिधर हम खड़े हैं, ये कौन आज प्रेडिक्ट कर सकता है कि 1 महीने के बाद क्या होगा पाकिस्तान में? किसी को भी नहीं पता। इसीलिए सारे जो बाहर की भी बिजनेस, जो फाइनेंस कम्युनिटी है, वो भी उसका रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये जो CDS पाकिस्तान का पहुंच गया 122 पे, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि वो अब नहीं फील करते कि पाकिस्तान की इकोनॉमी अपनी लायबिलिटीज बीट कर सकती है। अंदर पहले गैलप की सर्वे है कि 88% बिजनेसमैन कहते हैं कि जो पाकिस्तान का डायरेक्शन है इकोनॉमी का, ये गवर्नमेंट का, वो गलत तरफ है। यानी उनका भी कॉन्फिडेंस नहीं है। तो कॉन्फिडेंस तो रिस्टोर करने में सिर्फ एक चीज है, और वो इलेक्शन करवाना। और ये अब से नहीं, ये जब से हमारी गवर्नमेंट गई है, मैं तब से लगा हूं कहने कि आप जब तक इलेक्शन नहीं करवाएंगे, इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आने लगी। और ये हमें कहना, सारे कह रहे जी कि ये जो आप सारी मूवमेंट कर रहे हैं या पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, ये कोई वापस पावर आने के लिए कर रहे हैं। पावर में तो हमने आना ही है इंशाल्लाह। वो तो आप जो हालात ये गवर्नमेंट ने कर दिया है, हमें तो इलेक्शन कैंपेन करने की भी जरूरत नहीं है। जो इस वक्त मुल्क का हाल है, और जो इकोनॉमी का हाल है, जो महंगाई का हाल है, और जो आज बिजनेस कम्युनिटी जो शायद समझती थी कि ये कुछ कर देंगे, वो सबको अब ये मुत्तफिक है कि गवर्नमेंट तो अब कुछ नहीं कर सकती। लेकिन और जितनी देर चलता जाएगा, हमारी पार्टी गेन कर रही है, और वो वाजे है, चाहे बाय इलेक्शन हो, चाहे ओपिनियन पोल्स हो। लेकिन मुझे जो खौफ आ रहा है कि ये पाकिस्तान को उधर ले जाएंगे जिधर ये सबके हाथ से बाहर निकल जाएगा। यानी ये उधर ना पहुंच जाए कि हमें उतनी पीछे धकेल दें कि जो भी गवर्नमेंट आएगी उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो फिर ये सिचुएशन को कंट्रोल करना। तो मेरी नंबर 1 फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, और ये जितनी जल्दी हो सके, ये हमारी रिवाइवल की बिगिनिंग वो होगी। यानी हम फिर से शुरू करेंगे अपने मुल्क को उठाने के लिए। वो होगा ही तब जब एक गवर्नमेंट आए, और गवर्नमेंट आए अच्छी अक्सरियत से। मुझे अगर किसी ने पूछा कि जी आप अगर फिर से आपको मौका मिलता 2018 में तो आप क्या करेंगे, तो विद हाइंडसाइट मैं कभी गवर्नमेंट ना लेता। क्योंकि एक तरफ इकोनॉमिक चैलेंजेस बड़े थे, दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं है। तो कमजोर गवर्नमेंट के साथ तो ये आप कर ही नहीं सकते, रूल ऑफ लॉ ही नहीं स्टैब्लिश कर सकते। आप ये इकोनॉमिक चैलेंजेस फाइट कर ही नहीं सकते जब तक आपकी स्टेबल गवर्नमेंट ना हो। प्रेसिडेंशियल सिस्टम बिल्कुल मुख्तलिफ है, उसमें स्टेबिलिटी है, लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम जिसके अंदर कोलिशन गवर्नमेंट विद थिन माइनॉरिटी मेजॉरिटी, उसके लिए तो बहुत ही मुश्किल है कि बड़े चैलेंजेस को कोप करने के लिए। तो मैं अगर फिर से होता, मैं फिर इलेक्शन करवा देता, मैं कभी गवर्नमेंट ना लेता।
तो मैं अब समझता हूं कि एक गवर्नमेंट आए विद अ क्लियर मेजॉरिटी और वो फिर सबसे पहले रूल ऑफ लॉ इंप्लीमेंट करे। मैं एक इकोनॉमी की अब बात कर रहा हूं। इकोनॉमी जो है, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी के मसाइल हैं, वो रिलेटेड है रूल ऑफ लॉ से। जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होता, आपकी गवर्नेंस ठीक नहीं हो सकती। ये जो माफियाज बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, हर जगह मुझे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, माफियाज है। मैं एफबीआर के अंदर शुरू में हम टेक्नोलॉजी लाना चाहते थे, हम कोशिश करते रहे कि वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम अपनी टैक्स कलेक्शन बढ़ाएं। आप यकीन करें कि 1 साल तक हर वक्त वो सैबोटाज हो जाता था अंदर से। अंदर लोग बैठे हुए थे जो नहीं लाना चाहते थे, क्योंकि प्रेजेंट सिस्टम से इतना ज्यादा उसमें पिल्फरेज है, वो टेक्नोलॉजी नहीं आने देते थे। जब एंड में मुझे अफसोस ये है कि जब हम फाइनली हमने ये ब्रेक डाउन करके और हम पहुंच गए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम पे, ये जो सेल्स टैक्स की इवेजन है वो बिलियंस और बिलियंस में है, वो हमने जब टेक्नोलॉजी वो ले आए। और दूसरा फिर हमने ये डेटाबेस, नादरा के डेटाबेस से टैली करके, शौकत तरी ने पता नहीं मेंशन किया या नहीं, हमने आइडेंटिफाई किए टैक्स पेयर्स जो कि अच्छे लाइफस्टाइल उनका था लेकिन जीरो टैक्स देते थे, वो हमने बेस बढ़ाने के लिए उधर हम पहुंचे। तो अनफॉर्चुनेटली तब हमारी गवर्नमेंट करा दी गई। तो नंबर 1 चीज है कि पाकिस्तान में एक ताकतवर गवर्नमेंट रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश करे। ये जो माफियाज है हर जगह, शुगर माफिया है, ये सीमेंट है, सबसे बड़ा माफिया रियल एस्टेट माफिया। आप सोच नहीं सकते कि इनकी अब इस वक्त पावर क्या है। और अब मैं आपको मिसाल देता हूं कि अभी जो रिसेंटली हुआ है, हमने एक एलडीए वाले आए मेरे पास, उन्होंने उसके डीजे ने मुझे बताया कि 200 अरब रुपए की जमीन बेच दी गई है। या वो दरिया के अंदर थी, रिवर बेड में थी, या वो इरिगेशन की, और या फॉरेस्ट की जमीन, और वो बेच के, प्लॉट्स बेच के पैसा भी बाहर चला गया। तो मैंने उनसे पूछा तुमने क्यों नहीं एक्शन क्यों नहीं लिया? उन्होंने कहा मल्टीपल एफआईआर काटी, पुलिस को पैसा खिलाया हुआ था, पुलिस ने वो उसको अप्रोच कर दी थी। उन्होंने जब लोग अपने भेजे, उन्होंने बकायदा मारा उनके लोगों को और उल्टी उनके ऊपर एफआईआर काट दी। उन्होंने जो भी डिपार्टमेंट जाती थी नीचे से पैसे, इतना पैसा है इसमें, तो आप ये सोच लें कि ये हर लेवल पे चल रहा है। और आप इमेजिन करें पैसा कितना है पाकिस्तान में, कि ये जब मैंने सीडीएम बड़ी मुश्किलों से हमने कैडेस्ट्रल मैपिंग करवाई, वो भी देर लगी, डिले करते रहे। तो जब हमने वो मैपिंग करवाई, यानी डिजिटलाइजेशन की, हमने लैंड रिकॉर्ड्स की, तो सिर्फ इस्लामाबाद में 1200 अरब रुपए की जमीन के ऊपर कब्जा हुआ है, गवर्नमेंट की जमीन के ऊपर। और ये सारे पाकिस्तान में ऐसे ही है। ये जब तक एक स्टेट के पास पावर हो टू इम्प्लीमेंट, कि स्टेट की रेट हो, और वो होगी एक ताकतवर गवर्नमेंट से। तो मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि इससे हम टैक्स कलेक्शन अपनी बड़ी एनहांस कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, ये जो बड़े पावरफुल लोग हैं इनको टैक्स करके। और फिर सेकेंडली एक्सपोर्ट्स के ऊपर, और मुझे फख्र था कि हमने जोर लगा के मीटिंग्स करके एक्सपोर्टर्स से मिलके रुकावटें उनकी हटाते गए, क्योंकि हर जगह एक्सपोर्टर्स के लिए रुकावटें थी। तो मैंने रियलाइज किया हमारा माइंड सेट ही नहीं है इस चीज के ऊपर। यानी कई मैं आपको मिसालें दे सकता हूं कि जिधर एक्सपोर्टर मुल्क को बेनिफिट पहुंचा रहा है, डॉलर्स लेके आ रहा है, लेकिन उसके लिए हर किस्म का जो हमारा सिस्टम है रुकावटें पैदा की हुई थी। तो जो एक माइंड सेट अब चेंज करने की बात है कि सारे मुल्क को हमने लगाना है कि हम डॉलर कैसे ज्यादा मुल्क में आ सकते हैं। हमने रेमिटेंसेस बढ़ाई, हमने इंसेंटिवाइज किया अपनी ओवरसीज पाकिस्तानीज को, उन्होंने बैंक चैनल से पैसे भेजे, तो रिकॉर्ड रेमिटेंसेस भी आई। लेकिन इससे बहुत कुछ और हो सकता है। सबसे बड़ी चीज यह है कि जब रूल ऑफ लॉ हो तो हमें इन्वेस्टमेंट आएगी बाहर से। मेरी कंटेंशन ये है कि 10 बिलियन बैरून पाकिस्तानी है। अगर हम इनमें से 20 लाख को भी, 15 लाख को भी, अगर हम उनको इन्वेस्टमेंट के लिए ले आए पाकिस्तान में,
तो वो हमें, मेरे ख्याल में वो इतना ज्यादा पैसा ला सकते हैं कि हमें जरूरत नहीं है किसी से पैसे लेने की। लेकिन उनका, और अब ओवरसीज पाकिस्तानी से पूछें, क्योंकि मेरा उनसे इंटरेक्शन है, उन्होंने मुझे शौकत थाना में मदद की, नमल यूनिवर्सिटी में 30 साल से मेरा इंटरेक्शन है, पीटीआई में जिसको ये फॉरेन फंडिंग कहते हैं, कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने हमें फंड किया। आप इनसे पूछें कि क्यों नहीं इन्वेस्ट करते पाकिस्तान में, दुबई में चले जाते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। यही पाकिस्तानी आप देखेंगे मलेशिया भी इन्वेस्ट करते हैं, पाकिस्तान नहीं आते। एक वजह है, किसी को कॉन्फिडेंस नहीं है कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट पे। उनको ये खौफ है कि उनके साथ कोई फ्रॉड होगा, और होते हैं, जमीन पे उनके कब्जे हो जाते हैं, प्लॉट्स पे कब्जे हो जाते हैं। तो अगर आपने कोई कारोबार शुरू करना है, उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि यहां उनको प्रोटेक्शन मिलेगी पाकिस्तान के इंसाफ के निजाम से। मैं अगर आपको सारा समअप कर दूं एंड में, कि देखें जो जिधर ये लेके जा रहे हैं पाकिस्तान को, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जो भी अब गवर्नमेंट आएगी उसको वो स्टेप्स लेने पड़ेंगे जो हमने आज तक लिए नहीं है। वो उसका बेसिस होगा कि हमने कानून के नीचे, कानून की बालादस्ती कायम करनी है, और ये नंबर 1 चीज होगी जो, और ये आसान नहीं होगा क्योंकि जो ताकतवर है वो आराम से कानून के नीचे नहीं आता। लेकिन अगर हमने ये शुरू कर दिया तो जैसे जैसे लोगों को कॉन्फिडेंस होता रहेगा पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम में, तो यहां इन्वेस्टमेंट की कोई कमी नहीं है, क्योंकि 22 करोड़ लोग एक बहुत बड़ी मार्केट होती है। ये मुझे सीमेंस का मुझे चेयरमैन मिला उधर डेवोस में, तो वो मेरे से पूछ रहा था कि क्यों नहीं सारे इस वक्त सारी दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स के हेडक्वार्टर्स पाकिस्तान में होने चाहिए, आपका 22 करोड़ की आपकी आबादी है। लेकिन आप उसको जब आप आगे बढ़ेंगे तो इवेंचुअली वो आ जाएगा कि उनको पाकिस्तान के सिस्टम में कॉन्फिडेंस नहीं है। तो एक हमें स्टेबिलिटी चाहिए, एक गवर्नमेंट आए जो कि 5 साल के लिए आए और स्टेबल गवर्नमेंट, उसके बाद वो इन्फोर्स करे रूल ऑफ लॉ, जिसके अंदर बिजनेस की प्रोटेक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट, इसके लिए अगर आप स्पेशल कोर्ट्स भी बनाने पड़े। लेकिन जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, जो भी इन्वेस्ट करता है हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर, उनको स्पेशल इंसेंटिवाइज करें। जो भी आगे से अगर कभी, जो मेरे से एक गलती हुई वो एंड में हमने करने की कोशिश, मुझे शुरू में करना चाहिए था कि आगे से जो भी हम अब एमनेस्टी कभी दें तो एमनेस्टी सिर्फ एक होनी चाहिए कि जो भी अपना पैसा इंडस्ट्री में लगाएगा उसी का सिर्फ वो ब्लैक का पैसा व्हाइट कर सकता है। यानी हम सारा डायरेक्शन अपने मुल्क का वेल्थ क्रिएशन में लगाएं, इंडस्ट्री में लगाएं। बिजनेसेस की रुकावटें जो हम दूर कर रहे थे स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री के लिए, हमने खास तौर पे एंड में मैं मीटिंग्स देता था, उनकी गिलोटीन करते थे, जो डिफरेंट रेगुलेशंस है जो उनको उनके लिए कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में इजाफा कर देते थे। और मैं आखिर में ये कहना चाहता हूं कि देखिए, मेरा जितना भी ये 3.5 साल में मैंने देखा कि इतना ज्यादा पोटेंशियल है यहाँ। नंबर 1 टूरिज्म, जितना टूरिज्म के अंदर, क्योंकि मैं अनफॉर्चुनेटली कोविड के 2 साल आ गए जिसमें दुनिया में टूरिज्म इफेक्ट हुई, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि पाकिस्तान में ऐसी ऐसी जगह हैं, और हमने एक पूरा प्लान भी किया हुआ है एक स्कर्दू के अंदर एक जगह कि पूरी रिजॉर्ट बने, क्योंकि वो ऐसी ऐसी जगह हमारी। ऑस्ट्रिया से मेरे पास टूरिज्म के लोग आए, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कुड बिकम द नेक्स्ट स्कीइंग सेंटर इन द वर्ल्ड, क्योंकि वो ग्लोबल वार्मिंग से बर्फें पिघलती हैं जल्दी यूरोप के अंदर, तो पाकिस्तान की हाइट इतनी ज्यादा। सो टूरिज्म एक है, हर किस्म की रिलीजियस टूरिज्म है, वो सारा हमारा जो कोस्ट लाइन है वो सारी वर्जिन टेरिटरी है, और माउंटेन टूरिज्म। और तीसरी चीज कि पाकिस्तान के अंदर जो हमने कभी जोर नहीं लगाया कनेक्टिविटी का, वो हम एंड में कोशिश कर रहे थे। सारा सेंट्रल एशिया इस वक्त पाकिस्तान के लिए, और अफगानिस्तान में अगर स्टेबिलिटी जो अब आ रही है, तो हमारे लिए वो सारा एक एरिया, वो भी वर्जिन टेरिटरी है, उसके अंदर भी इतना ज्यादा पोटेंशियल है जो हमने एंड में जाके कोशिश की थी एक्सप्लोर करने की। और आखिर में ये जो हमारा इस वक्त क्राइसिस है ये एनर्जी का, मैं फर्म बिलीवर हूं कि हमें आते साथ ही हमें रशियन ऑयल लेना चाहिए था। हमने उनसे बात कर ली थी कि अप्रैल के अंदर हमने रूस से तेल खरीदना शुरू कर दिया था डिस्काउंटेड रेट पे, जो हिंदुस्तान कर रहा था। और ये इतने
खौफजदा होते हैं अमेरिकन से, ये रियलाइज नहीं करते कि इंडिया हमारे सामने, इंडिया ने स्टैंड लिया, उन्होंने पूरी जोर लगाया कि इंडिया रूस का तेल ना ले। आपके सामने है वो जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने कितनी अपने मुल्क के लिए वो खड़ा हुआ, यानी वो अमेरिकन अंडरस्टैंड करते हैं ये चीज। हमारा इस वक्त तकरीबन 10 करोड़ लोग हैं जो वनरेबल हैं, 5 करोड़ लोग हमारी गुर्बत लकीर से नीचे हैं, 5 करोड़ लोग ऊपर इतने हैं कि अगर प्राइस शॉक आता है वो नीचे चले जाते हैं। तो इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये जो एनर्जी ड्रिवन इन्फ्लेशन है, तो हमें तो इसके ऊपर पूरा अपना उनको, और मैं बिलीव करता हूं कि हम कन्विंस कर सकते थे अमेरिकन को, हम कन्विंस कर सकते थे कि हमें सस्ता तेल आने दो। फाइनली मैं ये समझता हूं कि जो चैलेंजेस बढ़े हैं पाकिस्तान में, लेकिन मैं ये भी बिलीव करता हूं कि अगर हम वो अब स्टेप्स उठाएं जो हमने अभी तक दे लिए पाकिस्तान में, हमने जो की है, मैं फिर से मेरी सारी जो जिंदगी की स्टडी है दुनिया में कि अमीर और गरीब मुल्कों में फर्क ही है क्या। अमीर मुल्कों के अंदर रूल ऑफ लॉ है, गरीब मुल्कों के अंदर अनफॉर्चुनेटली सारे जितने भी गरीब मुल्क हैं वो उनके अंदर ताकतवर के लिए कानून है और कमजोर के लिए दूसरा है, और ये वाहिद वजह है कि वो गरीब रह जाते हैं। नाइजीरिया तेल के ऊपर बैठा हुआ है, गुर्बत है, क्योंकि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के ऊपर नाइजीरिया 7% है। स्विट्जरलैंड विदाउट रिसोर्सेज खुशहाल तबका है क्योंकि 99.9% रूल ऑफ लॉ है। सारी वेस्टर्न डेमोक्रेसीज 90% से ज्यादा है, तकरीबन सारी मुसलमान दुनिया 20% से कम है, और पाकिस्तान 10% से कम है। तो जब तक ये जो असल इशू है, खुशहाली आती है रूल ऑफ लॉ के बाद, इंसाफ होता है तो खुशहाली आती है, ये जो कि दुनिया के एक्सपीरियंस पे साबित हो गया। और मैं भी ये समझता हूं कि हमें अगर अल्लाह ने मौका दिया तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमने स्ट्रेंथन करना है अपना इंसाफ का निजाम। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच चेयरमैन ने जो एक बात बहुत अच्छी की, और ये आगे आने वाले दिनों के लिए सबके लिए सबक है, एक टाइम पे 2 महाज ना खोलें। ये मुझे आज से 15 साल पहले मेरे एक बॉस ने कहा था। जब मेरी शादी हो रही थी तो मैं नौकरी छोड़ने की सोच रहा था, तो मेरे बॉस ने मुझे कहा था कि बेटा आप शादी भी कर रहे हो और नौकरी भी छोड़ रहे हो, तो दोनों जो है ना नाकाम हो जाएगी। इसी तरह चेयरमैन ने एक बात की कि जब कमोडिटी सुपर साइकिल जो 1970s के बाद आया हुआ था, और जो है हमारी हुकूमत उससे फाइट कर रही थी, उस वक्त आपने रिजीम चेंज करके जो है ना कमोडिटी सुपर साइकिल को आप कर सके और ना लोकली चीजें मैनेज कर सके। लेकिन चेयरमैन ने एक पैगाम आप सारों के लिए दे दिया है कि जैसे ही वो आएंगे पाकिस्तान में, वो फैसले होंगे जो शायद पाकिस्तान को 75 साल पहले कर दे शायद। इसके साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका यहाँ आने का, और अब हमारी छोटी सी हाई टी है, वहाँ पे आप नेटवर्किंग करें और जो है हाई टी एंजॉय करें। थैंक यू वेरी मच। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शौकतरीन, मैं आपको और सारे जो पैनलिस्ट हैं, पहले तो मैं सुन रहा था आपकी ये जो आज आपने सेमिनार में इकोनॉमी के ऊपर बातचीत की है, तो पहले तो मैं आप सबको, जिस तरह आपने डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर बात की इकोनॉमी की, तो मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। देखिए, मैं जो इकोनॉमी के हालात हैं, पहले मैं आपको सबको रिमाइंड करवा दूं कि हम जब 2018 में आए थे तो हालात तब भी बहुत बुरे थे, और जो सबसे बड़ा मसला हमारे सामने था वो करंट अकाउंट डेफिसिट था, क्योंकि पाकिस्तान फंसता इधर आके है। हमने कभी अपनी एक्सपोर्ट्स के ऊपर जोर नहीं लगाया। हमारे सामने ईस्ट एशियन टाइगर्स बने, चाइना को हमने देखा पिछले 30 साल में आगे बढ़ते हुए। सारों ने बेसिकली वेल्थ क्रिएशन की एक्सपोर्ट बढ़ा के। यहां तो मैंने कभी किसी को मुझे कभी किसी ने नहीं बताया कि जनाब सारे मुल्क को वेल्थ क्रिएशन एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए सारे मुल्क को तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी एक्सपोर्ट्स ही नहीं बढ़ेंगी तो ये जो मर्जी आप कर लें, जैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी फंस जाएगा जाके।
करंट अकाउंट आपका, और वो फिर जब डेफिसिट होता है फिर वो सारा वो बूम बास्ट साइकिल फिर से शुरू हो जाता है। तो हमारा तब बड़ा था, और मुझे याद है कि बड़ी मुश्किलों से हमने पहला 1 साल सरवाइव किया। और मुझे अभी भी याद है कि अगर हमें सऊदी अरेबिया, यूएई और चाइना हेल्प ना करते तो हमारे पास पैसे नहीं थे अपनी लाइबिलिटीज देने के लिए। तो वो बड़ा टाइमली उन्होंने हमारी मदद की, और उसके बाद जैसे हम थोड़ा स्टेबलाइज हो रहे थे तो फिर कोविड-19 आ गई। तो कोरोना का मैं सिर्फ आप सबको कहना चाहता हूं कि वो भी एक बहुत बड़ा क्राइसिस था दुनिया के अंदर। आप जब देखें कि कैसे लोगों ने कोप किया है कोविड-19 से, तो जो हमारा उस वक्त था वो हमारा एक बहुत ही बड़ा डायलेमा था सामने, कि अगर हम लॉकडाउन लगा देते, जो उस वक्त मेरे ऊपर सारी दुनिया से, यानी मुल्क से प्रेशर था, लेकिन सारी दुनिया में देख रहे थे कि इटली, स्पेन और फिर इंग्लैंड के ऊपर लॉकडाउन लग रहे थे, तो मुझे सारे जोर लगा रहे थे कि जी आप भी लॉकडाउन लगाएं, और बड़ी तनकीद हुई मेरे पे। लेकिन मेरा तो बेसिक सवाल ये था कि पहले हमारी इकोनॉमी हमने 1 साल स्टेबलाइज करते करते उसको बिल्कुल स्क्वीज कर दिया था, हमारी ग्रोथ रेट बिल्कुल गिर चुकी थी। तो उसके बाद हम कोविड में अगर शटडाउन कर देते अपनी इकोनॉमी, तो यहां तो लोगों ने भूखे मर जाना था। और प्लस कभी भी किसी ने मुझे जवाब नहीं दिया। मैं सबसे पूछता था कि दिहाड़ीदार का क्या बनेगा, जो पैसा कमा के बच्चों को खिलाता है, तो किसी के पास जवाब नहीं था इसका। एनीवे, वहां हमने बड़े बोल्ड फैसले किए, और मुझे बड़ा फख्र है अपनी सारी टीम पे कि हमने बड़े इनोवेटिव किस्म के फैसले किए। मैंने खुद फिर वो जो IMF की हेड थी उनको मैंने खुद टेलीफोन करके बड़ी मुश्किल से कन्विंस किया कि हमें जो IMF का प्रोग्राम है उससे हमें आपको थोड़ी लीवे देनी पड़ेगी, नहीं तो हमारे यहाँ लोग भूखे मर जाएंगे। और उससे फिर कन्विंस करके हमने अपनी एग्रीकल्चर के ऊपर पूरी खासतौर पर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए फिर हमने उनसे खास रियायत ली, इंसेंटिव्स लिए, और हमने हमारी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री थी उसके अंदर जो ग्रोथ हुई उससे एक्चुअली रोजगार भी बचा दिया लोगों का, और हमारी जो ग्रोथ रेट थी उसको भी आहिस्ता आहिस्ता पिक करना शुरू किया। और जो तीसरा और चौथा साल था उसके अंदर डिस्पाइट कोविड हमारी जो मेंशन किया होगा 5.7% ग्रोथ रेट थी, और जो आखिरी साल में 6% थी। तो हम एक बड़े यानी डबल क्राइसिस से निकले थे। एक तो पहले ही हमारा जो मैसिव करंट अकाउंट डेफिसिट था, और दूसरा कोविड का जो मसले आए। अब क्वेश्चन सबसे पहले तो ये जरूर पूछना चाहिए कि उधर से जब ये रजीम चेंज की गई तो मुझे अभी भी समझ नहीं आई कि जो रजीम चेंज करने वाले थे क्या उन्होंने रियलाइज किया कि सारी दुनिया में कमोडिटी सुपर साइकिल आया हुआ था, एनर्जी प्राइसेस सारी दुनिया में ऊपर चले गए थे, और क्या उन्होंने रियलाइज नहीं किया कि हम बड़ा एक बैलेंसिंग एक्ट कर रहे थे पाकिस्तान में। हर रोज मैं जब ऑफिस जाता था तो सबसे पहले हमारी होती थी कि हमारे रिजर्व्स का क्या हालात है, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, यानी खौफ ही होता था कि हम अपने उसको करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल करें, क्योंकि तेल की कीमत $100 से ऊपर चली गई थी। लेकिन जिन्होंने जब ये हमें पता चला कि साजिश हो रही है, तो मैंने खुद और फिर मैंने शौकत तरीन को भेजा बताने के लिए न्यूट्रल्स को कि देखें अगर आप जो वाकई कह रहे हैं आप न्यूट्रल रहेंगे और इस साजिश पे, तो ये कंट्रोल नहीं होगी इकोनॉमी किसी से। ये इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन का, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी इकोनॉमी में पड़ेगा, और वो आगे फ्रेजाइल किस्म का बैलेंस है और सारी दुनिया में इश्यूज हैं। तो ये जो इकोनॉमिक मैनेजर्स जिनको हमारी जगह लाया जा रहा है, इनका तो ट्रैक रिकॉर्ड 30 साल का है। वो कौन सा गोल्डन एरा था जब इन्होंने कोई इकोनॉमी को बड़ा अच्छा संभाला था? क्योंकि 90s के अंदर डॉक्टर इशरत हुसैन अपनी किताब में लिखते हैं कि 90s से पहले पाकिस्तान तो सारे सब कॉन्टिनेंट में इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पाकिस्तान के बेहतर थे। 90s में हम पीछे जाना शुरू हुए जब से ये दो खानदान आए हैं। तो इनका कौन सा ट्रैक रिकॉर्ड था कि इन्होंने किसी मुल्क को इकोनॉमी को संभाला था कि इनको फिर लाया जा रहा था? और वही जो आज हुआ, आज जो हुआ है ये होना ही था।
اور میں نے اس سے 5-6 مہینے پہلے میں نے یہی پریڈکٹ کیا تھا کہ یہ جو گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے ملک کو ڈیفالٹ کی طرف لے جانا ہے، اور میرے اوپر انہوں نے کہا جی آرٹیکل 6 لگا دینا چاہیے، غدار ہے یہ ملک کا. تو آج اب جدھر ہم کھڑے ہیں کوشچن تو اب یہ ہے کہ اسے نکلنا کیسے ہے. نمبر 1 چیز، جب تک اس ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی، کوئی بھی آپ جینیس لے آئے اکانومی کا وہ اب کچھ نہیں کر سکتا. کیونکہ جو اکانومی ہے، اکانومی ڈائریکٹلی ساری دنیا کے اندر وہ ڈیمانڈ کرتی ہے سرٹنٹی. جب تک سرٹنٹی نہیں ہوتی بزنسز، ہم سب جانتے ہیں اور آپ تو خیر میرے سے بہتر جانتے ہیں اکانومی جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ جب تک ایک اکانومی کے اندر لوگ پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ میں آج اگر پیسہ انویسٹ کروں گا تو آگے اگلے 6 مہینے 1 سال 2 سال تک ماحول کیا ہوگا ملک کا، لوگ انویسٹ نہیں کرتے. تو آج جدھر ہم کھڑے ہیں یہ کون آج پریڈکٹ کر سکتا ہے کہ 1 مہینے کے بعد کیا ہوگا پاکستان میں؟ کسی کو بھی نہیں پتا. اسی لیے سارے جو باہر کی بھی بزنس جو فائنانس کمیونٹی ہے وہ بھی اس کا ریفلیکٹ کر رہا ہے. یہ جو سی ڈی ایس پاکستان کا پہنچ گیا 122 پہ، وہ ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ وہ اب نہیں فیل کرتے کہ پاکستان کی اکانومی اپنی لائبلٹیز بیٹ کر سکتی ہے. اندر پہلی گیلپ کی سروے ہے کہ 88% بزنس مین کہتے ہیں کہ جو پاکستان کا ڈائریکشن ہے اکانومی کا، یہ گورنمنٹ کا، وہ غلط طرف ہے، یعنی ان کا بھی کانفیڈنس نہیں ہے. تو کانفیڈنس تو ریسٹور کرنے میں صرف ایک چیز ہے اور وہ الیکشنز کروانا. اور یہ اب سے نہیں، یہ جب سے ہماری گورنمنٹ گئی ہے میں تب سے لگا ہوں کہنے کہ آپ جب تک الیکشن نہیں کروائیں گے اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آنے لگی. اور یہ ہمیں کہنا، سارے کہہ رہے ہیں جی کہ یہ جو آپ ساری موومنٹ کر رہے ہیں یا پولیٹیکل ایکٹیویٹی کر رہے ہیں یہ کوئی واپس پاور آنے کے لیے کر رہے ہیں. پاور میں تو ہم نے آنا ہی ہے انشاءاللہ. وہ تو آپ جو حالات یہ گورنمنٹ نے کر دی ہے، ہمیں تو الیکشن کیمپین کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جو اس وقت ملک کا حال ہے اور جو اکانومی کا حال ہے، جو مہنگائی کا حال ہے، اور جو آج بزنس کمیونٹی جو شاید سمجھتی تھی کہ یہ کچھ کر دیں گے، وہ سب کو اب یہ متفق ہے کہ گورنمنٹ تو اب کچھ نہیں کر سکتی. لیکن اور جتنی دیر چلتا جائے گا ہماری پارٹی گین کر رہی ہے اور وہ واضح ہے، چاہے بائی الیکشنز ہو چاہے اوپینین پولز ہو. لیکن مجھے جو خوف آ رہا ہے کہ یہ پاکستان کو ادھر لے جائیں گے جدھر یہ سب کے ہاتھ سے باہر نکل جائے گا. یعنی یہ ادھر نہ پہنچ جائے کہ ہمیں اتنی پیچھے دھکیل دیں کہ جو بھی گورنمنٹ آئے گی اس کے لیے بہت ہی مشکل ہو پھر یہ سچویشن کو کنٹرول کرنا. تو میری نمبر 1 فری اینڈ فیئر الیکشنز، اور یہ جتنی جلدی ہو سکے یہ ہماری ریوائول کی بگننگ وہ ہوگی. یعنی ہم پھر سے شروع کریں گے اپنے ملک کو اٹھانے کے لیے. وہ ہوگا ہی تب جب کہ ایک گورنمنٹ آئے اور گورنمنٹ آئے اچھی اکثریت سے. مجھے اگر کسی نے پوچھا کہ جی آپ اگر پھر سے آپ کو موقع ملتا 2018 میں تو آپ کیا کریں گے، تو ود ہائنڈ سائٹ میں کبھی گورنمنٹ نہ لیتا. کیونکہ ایک طرف اکنامک چیلنجز بڑے تھے، دوسری طرف پاکستان کے اندر رول آف لا نہیں ہے. تو کمزور گورنمنٹ کے ساتھ تو یہ آپ کر ہی نہیں سکتے، رول آف لا ہی نہیں اسٹیبلش کر سکتے. آپ یہ اکنامک چیلنجز فائٹ کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ کی اسٹیبل گورنمنٹ نہ ہو. پریزیڈینشل سسٹم بالکل مختلف ہے، اس پہ اسٹیبلٹی ہے، لیکن پارلیمنٹری سسٹم جس کے اندر کولیشن گورنمنٹ ود اے تھن میجورٹی، اس کے لیے تو بہت ہی مشکل ہے کہ بڑے چیلنجز کو کوپ کرنے کے لیے. تو میں اگر پھر سے ہوتا میں پھر الیکشن کروا دیتا، میں کبھی گورنمنٹ نہ لیتا. تو میں اب سمجھتا ہوں کہ ایک گورنمنٹ آئے ود اے کلیئر میجورٹی اور وہ پھر سب سے پہلے رول آف لا امپلیمنٹ کرے. میں ایک اکانومی کی اب بات کر رہا ہوں. اکانومی جو ہے، جو پاکستان کی اکانومی کے مسائل ہیں وہ ریلیٹڈ ہے رول آف لا سے. جب تک رول آف لا نہیں ہوتا آپ کی گورننس ٹھیک نہیں ہو سکتی. یہ جو مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں، ہر جگہ مجھے جو سب سے بڑا پرابلم کیا ہے، مافیاز ہے. میں ایف بی آر کے اندر شروع میں ہم ٹیکنالوجی لانا چاہتے تھے،
हम कोशिश करते रहे कि वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम अपनी टैक्स कलेक्शन बढ़ाएं। आप यकीन करें कि 1 साल तक हर वक्त वो सैबोटाइज हो जाता था अंदर से। अंदर लोग बैठे हुए थे जो नहीं लाना चाहते थे, क्योंकि प्रेजेंट सिस्टम से इतना ज्यादा उसमें पिल्फरेज है, वो टेक्नोलॉजी नहीं आने देते थे। जब एंड में मुझे अफसोस ये है कि जब हम फाइनली हमने ये ब्रेक डाउन करके और हम पहुंच गए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम पे, ये जो सेल्स टैक्स की इवेजन है वो बिलियंस और बिलियंस में है, वो हमने जब टेक्नोलॉजी वो ले आए, और दूसरा फिर हमने ये डेटाबेस नादरा के डेटाबेस से टैली करके, शौकत तरी ने पता नहीं मेंशन किया या नहीं, हमने आइडेंटिफाई किए टैक्स पेयर्स जो कि अच्छे लाइफस्टाइल उनका था लेकिन जीरो टैक्स देते थे, वो हमने बेस बढ़ाने के लिए उधर हम पहुंचे, तो अनफॉर्चुनेटली तब हमारी गवर्नमेंट करा दी गई। तो नंबर 1 चीज है कि पाकिस्तान में एक ताकतवर गवर्नमेंट रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश करे। ये जो माफियाज है हर जगह, शुगर माफिया है, ये सीमेंट है, सबसे बड़ा माफिया रियल एस्टेट माफिया। आप सोच नहीं सकते कि इनकी अब इस वक्त पावर क्या है। और अब मैं आपको मिसाल देता हूं कि अभी जो रिसेंटली हुआ है, हमने एक एलडीए वाले आए मेरे पास, उन्होंने उसके डीजे ने मुझे बताया कि 200 अरब रुपए की जमीन बेच दी गई है